Yeah. Let's go. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. This is the Bigami. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Okay. So hello, hello. This is Bigami. और आज हम खेलने जा रहे हैं 3 मोबाइल न्यू गेम विच इज कॉल्ड 3 गेम है। नाम बोल देता हूँ मैं उनका। नाम कौन सा है? लॉस्ट इन प्ले, असेंबल एंड रैक। आज हम तीनों गेम ट्राई करेंगे और ये तीनों गेम इज सजेस्टेड बाय दी वन एंड ओनली दी फाल्गुन भाई। लेट्स सी कैसे जाता है। पहले हम ट्राई करेंगे द लॉस्ट इन प्ले। लेट्स सी कैसे जाता है, देखते हैं। अगर अच्छा गए डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें ट्राई करने का ट्राई किया जा रहा है। और यस, मोबाइल पे आ जाओ भाई। ये टर्न नहीं हो रहा है क्या यार? ये टर्न नहीं हो रहा है तो मेरे को ऐसे खेलना पड़ेगा। ओके, इसमें स्क्रीन रोटेट नहीं होता। यस, बट देखते हैं हाउ इट गोस। हेलो 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 हेलो। ओके, साउंड तो आ रहा है। ये मेरा साउंड ले रहा है कि नहीं, मेरे को वो देखना है। आई मीन इसका साउंड। आई विल ट्राई इट फॉर फ्री ब्रो। और इसमें वैसे भी ये नहीं चाहिए। ओह, ये ऐसे गैप क्यों दिख रहा है साइड में? डन, गैप फिल्ड। ये क्या है वैसे? ओ भाई साहब, अरे स्टेबल क्यों नहीं चल रहा है भाई इंटरनेट? अगर मैं इसको ऑफ भी कर दूं, राइट यार, इनको स्टेबल नहीं दिख रहा होगा यार इंटरनेट भाई। यार आई होप कि लोग को प्रॉपरली दिख रहा होगा। कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है भाई? इसका प्रायोरिटी हाईएस्ट कर दिया मैंने फिर से। एक बार कनेक्ट होकर डिस्कनेक्ट भी हुआ है। लेट्स सी भाई ये क्या है? A game by Yuval Marco, Oren Rubin and Alonso। वो भाई ये क्या है? अरे ओए, अरे थम जा भाई। बट तेरी कहाँ भाग गया ये? रिंग बजी, किसी का तो फोन आया है। लेट्स सी। Palo Pitica? हेलो पिटिका। Slano Gabo. समझ भी नहीं आया क्या बोला, बट ठीक है। इसमें मैं ऑडियो ठीक है। ओके,
नॉट बैड, अच्छा है, अच्छा है। ये क्या है लेकिन? ओ वाह, ये क्या था? बियर दिखा मेरे को। बालों में स्केच पेन रखा था, लुल। बालों में कौन रखता है स्केच पेन? ये क्या है? इसको कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, चलो। अरे यार, अब ये मैं कैसे ले लूँ? ठीक है, अच्छा बैग में मैं ये साइड भी नहीं जा सकता, ये साइड में इसके ऊपर कुछ कर सकता हूँ क्या? ओह, ठीक है, नाइस रे। जंपिंग जपाक, जंपक जंपक जंपिंग जपाक, इसके ऊपर अब ले पाऊंगा क्या? नाइस, फाइनली वी गॉट द कप। ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। ओ, अब ये क्या है? ओ अच्छा, समझ गया, तीनों को एक साथ करना। ओ भाई साहब, नाइस वन। ओ भाई, बढ़िया तो है भाई। घर जाना है। ओ, आई नीड a key for that, okay? बट अभी की कहाँ मिलेगा? लॉस्ट इन प्ले। कुछ भी नहीं मिला यार, लेकिन उसका की कहाँ से ढूंढ के निकालेंगे यार? मेरे को पीछे जाना पड़ेगा। ओ भाई, डक फ्रॉग, यार फ्रॉग देख के मेरे को थोड़ा वो लग रहा है, बट ठीक है। क्या बोलता भाई? उसने मेरे को और एक कप दिया। हाँ, कहाँ? चल, तेरे पास कप है। 두 사람이 집 부셨네. अच्छा, 3 कप चाहिए, समझ गया, मेरे पास 1 कप है। अरे हाँ भाई, इसमें कप है मेरे पास, ठीक है। ये ले, कप है मेरे पास भी। सो वो कप में उसके पास ये होगा, की होगा उसमें। नाइस, मेरे को चाबी दे दे, चाबी। थैंक यू, थैंक यू। दे 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 दे। वो उड़ते हुए इसके पास आएगा। नाइस वन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हमको पीछे जाना पड़ेगा, यस, जो कि हमने वो डोर देखा था ना पीछे, वहां पे वो लेने के बारे। या आई डू हैव अ की, बट लेट्स गो। समझ रहा हूँ इसको ये करना है, बट पहले सबसे नीचे वाला करना है ना। यस, ये वाला। एक रेड वाला यहाँ पे, राइट? मैं इसको रेड वाला ऐसे नहीं यार,
मैं एक काम करता हूँ, पहले रेड वाला करके देखता हूँ। ये कर दिया, एंड देन इसको घुमा के और यार थोड़े से के लिए बच गया ये। ओ डन, लेट्स गो। ये क्या मिला? ओ पानी, पानी भरने के लिए कुछ तो मिला है पेड़ों पे होगा। ये ले, Kajukan naluk. थैंक यू। बस भाई उसमें भी भर दे। मैजिकल चीजें हो रही है, नाइस वन। तेरी इसमें नहीं दिया मैंने। Ruksasnik. ये क्या है? ताज, जादुई भाई, ये स्थिति लाल। अरे उठ जा, सवेरे हो गया। देख लाइट आ रही तेरे मुंह पे, देख 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 देख। यार अच्छा है यार ये लाल। अरे उठ जा। वो ये क्या है? क्या देखे इसकी? ओ भाई, अब ये क्या है ऊपर? नहीं जा पाएगा। ओह, अब मेरे को ऊपर वो लेने के लिए मैं कैसे ले लूं? राइट, हेलो जोकर। ओ, इसको खींच के बना। अब चल रहा है कि नहीं? ओके चल रहा। अगर मैं इसके ऊपर जंप करके ये ले पाऊंगा क्या? अरे लेट्स गो। अरे भाई 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 भाई, स्क्रू ड्राइवर मिला है और एक बैटरी मिला है हमको। इसमें कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? Apakah cantik tak pakan? ओके, स्क्रू ड्राइवर चाहिए और एक वो चाबी लगाने के लिए और बैटरी चाहिए। हमारे पास दो चीजें हैं और एक चीज चाहिए हमको। इसको कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? अबे उठना भूत नहीं है। दादा बोला। ओह, मैं ये कुछ नहीं कर पा रहा। अब क्या? ओ ये तो रहा। ओ उसके ऊपर चाबी लगाया हुआ था, वही तो हमको चाहिए। लेकिन उसको हम कैसे पकड़े? हाउ? बट अब ये कैसे होगा? अरे बंद कर दी। लेट्स गो। अरे लेट्स फ्रिकिंग गो। मिल गया टाइम पे। चलो तीनों बंद कर दिया। अभी हमको अलार्म में ये तीनों चीजें लगानी है। ओके ओके, गॉट इट। Apakah cantik tak pakan? अरे है तीनों है मेरे पास। सो लेट्स गो। स्क्रू ड्राइवर से, ओ भाई चा, ये खोल दिया, ये खोल दिया। ओके, बैटरी लगा दिया।
चल ठीक है। ओह मैं भी भाई। अच्छा ठीक है। तो इसको सारे कनेक्ट करने मेरे को। Yeah, I got it, but okay. इस साइड में क्यों नहीं कर पा रहा मैं इसको? ये तो मैंने ज्वाइन कर लिया, अभी ये भी नीचे नहीं जा पा रहा, ये भी तो नहीं जा पा रहा नीचे। ओह ओके ओके। डन भाई डन डन, लेट्स गो। मैं वही सोचू ऐसे जा क्यों नहीं पा रहा था वो, अब जा पा रहा था। अरे यार मैंने देखा नहीं, कुछ तो हुआ। मैंने अलार्म तो दे लिया। इस चोंटे को उठाना है आई थिंक। अरे भाई तोड़ दी भाई उसने। Cukup nila cakap. क्या निकला? वीडियो गेम निकला बहस की। ओ भाई सही है। कितना अननोइंग लग रहा है, देख रहे हो? नाइस वन। ओ ये सारे कॉमिक्स, वाह 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 वाह। ये देखो ये है मॉन्स्टर से लड़ा, ऊपर 3 बंदे थे, ये वाला है भाई साहब। ये क्या है? DIY। ओके ये बॉक्स चाहिए, फिर उसको कट करना है मेरे को, एंड देन पेंट करना है उसको, एंड देन मास्क काइंड ऑफ बनाना था, हेलोइन टाइप। ऐसे चीजें बता रहे हम लोग। सो ठीक है, क्रेयॉन्स तो हमको यहाँ पे मिल चुका है। उठाओ। ओके चलो क्रेयॉन्स हो गया। उसमें और एक बॉक्स चाहिए था ना मेरे को, क्या क्या था? क्रेयॉन्स मिल चुका है हमको, बॉक्स और सीजर चाहिए। इसके लिए लॉक। ओके ये लॉक है, नहीं उठ रहा। ये Hami chika mama Nina. सो रहा है वो। आई थिंक उसे सोया तो उसके नीचे कुछ तो होगा भाई। ये रहा बॉक्स। उठ। सो वो अभी बॉक्स पे बैठा है, उसको कुछ तो खाने के लिए मेरे को देना पड़ेगा। और कुछ ओ बॉल मिला, लेट्स गो। ये बॉल से नहीं खेल पाएगा, वो खेलेगा, वो सोया हुआ है ना। ये नहीं खेल सकता है। नहीं ये क्या है? घंटी क्यों है? ओ बैट, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। ये तो कुछ काम का ही नहीं है वैसे भी। नहीं इसमें कुछ नहीं है। आई थिंक वो घंटे से उठेगा मे बी। इसको मैं पहले नहीं उठेगा। रुक जा भाई। Hami chika mama Nina. अच्छा सोया हुआ है, समझ गया। उसको घंटे से उठाएंगे। घंटे वो उठ जाएगा अभी ये।
अब इसको क्या करना है आगे आगे? मेरा टारगेट वो है, राइट? अरे हटा जा भाई। नहीं, इसको नहीं हटा पा रहा मैं। ओके, चलो ठीक है। ओके, एक डन। समझ गया समझ गया समझ गया। ओ, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तीनों को अपने तीनों जगह पे डालना है कैसे भी करके। सो व्हाट आई विल डू हियर इज, पहले हम यहाँ पे जाके इसको इसमें कर देंगे। ठीक है, ये डन हो गया। एंड देन इसको हम नीचे करके इसको यहाँ पे कर देंगे। एंड देन यार मैं ये साइड अभी जा नहीं पाएगा। अच्छा, जा पा रहा हूँ। इसको लगा दिया एंड देन, अरे यार इसको नहीं हटा सकता आगे। दो हो गया, तीसरा नहीं हो पा रहा। फर्स्ट इसको लगा देते हैं। यार फर्स्ट अगर मैं इसको लगा दिया तो मैं यहाँ पे ऊपर नहीं जा पा रहा। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं है। ओके, नहीं यार ये वैसे भी नहीं हो रहा है। यार दो ही हो रहा है। अभी इसको भी लगा दिया मैंने, इसको कैसे लगाओ अब? इनको तीनों जगह पे रखना है मेरे को कैसे भी करके। है बेस किया। ओका, इसको भोग करके भोग 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 भोग। नहीं हो रहा रे। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ एंड देन भाई दिस फील सो हार्ड रे। मतलब इजी भी है और हार्ड भी है। ये बीच में बॉक्स, यार इसको हटाना ही पड़ेगा मेरे को, तो ही कर पाऊंगा मैं। सो मैं इसको पीछे कैसे लाऊं? यार दो हो जाएगा। दो हो चुके हैं। अब इसको कैसे करवाओ? लेट्स गो भाई, दिमाग लगाओ यार फाल्गुन थोड़ा इसको है। यार दो शिप का हो रहा है, सेकंड थर्ड शिप का कैसे करवाऊं मैं? हिंट हिंट।
यार ये तो मैंने किया था। गाट इट से भाई। इसको यहाँ करते हैं एंड देन इसको जब भग करना है, इसको मुझे भग करना है। नहीं 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 नहीं। सुरेश सर पीसी चालू किया था गेम खेलने के लिए, इंटरनेट ऑन किया, तुम्हारी स्ट्रीम दिखी तो पीसी बंद। वाह भाई वाह भाई वाह, वेरी गुड। यार ये फिर वही हो रहा है भाई, हट बहस की आँख। अब इसको मैं बाहर कैसे लेके आऊँ यार, हट रे। यार ये समझ गया ऐसे करना है, बट ताकि पहले मैं ये कर सकूँ का, दोनों को मेरे जगह पे लेके आना है। ओके सो ये काम तो हो गया। अभी ऊपर जाते हैं, ऊपर ये करो भ होगा। नीचे जल्दी 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 ब लेट्स गो डन। आइए उठ जा भाई, डॉगी उठ जा। इसके नीचे कुछ तो छुपा होगा, ससुर के पास कुछ तो। ये लो बॉल से खेलेगा, आजा आजा आजा। भाई साहब फंस गई फंस गई। हाँ भाई सब तोड़ दे भाई, सब तोड़। नहीं 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 तू सब तोड़ दे। वो ये साइड गया ना। अच्छा उसके वो नीचे वो लगाना है, समझ रहा हूँ। अरे हाँ ये तो बिल्ली को भगाएगा ना, देख भगा इसको, बिल्ली को। भैंस की आंख, मेरे को बॉल। कौन जीतेगा? ओ भाई 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 झगड़ा होगा झगड़ा होगा झगड़ा होगा बिल्ली का। पकड़ उसको, जा उसको पकड़। मेरे को बॉक्स चाहिए था, दे बॉक्स। थैंक यू। चलो बॉक्स मिल गया और क्रेयॉन्स मिल गया। और अभी हमको और क्या चाहिए था इसमें? हे ब्रदर, अरे गेम खेलना छोड़। अरे ब्रदर छोड़। देखो बॉक्स मिल गया, सीजर चाहिए हमको, क्रेयॉन्स तो मिला ही है। और उसके ऊपर ऐसा बॉक्स बनाना है हमको, काट कूट के। नहीं हाँ समझ गया समझ लो। चिकला को किसको कॉल लगा सकता क्या? नहीं अरे यार इसको कैसे ओपन करूँ अभी मैं? ऊपर जा सकता हूँ क्या मैं फिर से अभी? ओ भाई भाई लोग ससुरा कैट क्या भाई, कैट का फोटो देखा कैसे था वो? अच्छा बोला यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए यार जो मेरे काम का हो भाई। ओ मे बी मैं अभी यहाँ बैठ। अरे चलो ना आगे मैडम। इसको ऐसे डराना है, ठीक है भाई। अरे थैंक। अरे
अरे ये ऐसे ऐसे उठा 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 भाई उठा। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें वो चीज लगानी है Kalau हमको। becik kuku. आलू चिकन कालू। ठीक है भाई, देखो हमको इसको यहाँ पे लगाना है। और ये ड्रावर का हमको चाबी नहीं मिला अभी तक, ड्रॉर का। हाउ वुड आई नो कि टाइम कितना हुआ है? मैं तो घुमा दूँ। आई हैव टू नो कि टाइम। अच्छा हाँ, अब मे भी ये टाइम हुआ है। यार टाइमिंग कहाँ दिख रहा है? अच्छा इसमें होना चाहिए ना। ये फाइट किया इन लोग, ये किया, ठीक है। 2-3 फ्रॉक थे, नहीं 4 फ्रॉक थे। एक राजा था, फिर पीछे देखा कि मॉन्स्टर आ रहा है। मॉन्स्टर ने राजा को पकड़ा। 3 सैनिक काइंड ऑफ निंजा टर्टल जैसे मारने गए उसको। तीनों ने फाइट करना ट्राई किया, लेकिन मॉन्स्टर ने जोर से चिल्लाया और तीनों गिर गए नीचे। और मॉन्स्टर राजा को ले गया, राजा को बंदी बनाया, उसको एक पेड़ पे रस्सी से बांधा। फिर तीनों जो सेनापति थे उसके आवाज से डर गए थे, उसके बाद बेहोश होने के बाद उठे, फिर उनको तलवार दिखी, खत्म। बस इतना ही है। यार सीजर कहाँ से मिलेगा इसमें? ये तो लगा दिया। और इसका टाइमिंग मेरे को कहाँ से पता चलेगा? हाउ वुड आई नो? ओ इसमें है ना टाइमिंग। ये क्या है? 9-12। ओके, नाइन 12 यही है ना कि 12-9 है? व्हाट वाज द टाइमिंग? अच्छा वो टाइमिंग नहीं है, 5-12 है। अरे करवा तो दिया भाई मैं। अब क्या बच्चे की जान लेगा? ए भाई गेम चोमती है भाई। ये क्या यहाँ पे दिखाया है? देखो 5। अच्छा वो आई थिंक जैसे जैसे उसका शैडो आएगा वो टाइम पे ही लगा सकता हूँ। 5-12 है टाइमिंग। अरे हो रहा है भाई, भगवान मेरे को कोई दिमाग दियो भाई। ये क्या यार? चाबी दिया, लेट्स गो। मेरे को लगा उसको घुमा नहीं सकता है मैं, बट ठीक है। 3 काटो का कब से मिल गया भाई? ये क्या मिला? सीजर मेरा। बाय 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 बाय, लेट्स गो। चलो अभी हैलोवीन का हम ये बना सकते हैं। चल बना 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 बना। अब कहाँ पे बैठ के बनाना है? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहाँ बनाना है? अरे मेरे को काटना है। देखो तीनों चीज़ें मिल गई है हमको, जैसे हमको इसमें बताया हुआ था। ये देखो बॉक्स मिला, सीजर मिला एंड क्रेयॉन्स भी मिल गया। उसके बाद ऐसा बनाना है। इसको बनाएंगे कहाँ पे? ये टेबल पे में भी? हाँ यस, टेबल पे बनाना है। लेट्स फ्रिकिंग गो। बना ली। अब तेरी बहन इसको डराएगी अपने भाई को। डरा डरा डरा। अरे डरा ना। ए पीछे देख। फाइनली वो निकला बाहर। तेरी वजह। ओ भाई ये क्या है? हैं? सेकेंड्स का तो काटा हिला रहा मेयर। ये क्या है? ओ भाई
गया 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 भाई साहब भगवान। क्या वो एमजी भी था? अच्छा हो रहा है। ओ भाई साहब बटन बटन दिया बाहर भाई, ट्री को बटन लगा के रख दी भाई। वेरी गुड। अच्छा था अच्छा था अच्छा। बटन दबाइयो। वो अब हम इसके साथ खेलेंगे। ये क्या गिरा? ये क्या? ये क्या? Sloni gubi reki. क्या बोला? चुमनी बूटी की थी। Sloni gubi reki. अनिगर बूटी भाई क्या बोला ये? हे Krutotsi. चश्मा चाहिए भाई इसको। इसको दिख नहीं रहा है, उसको चश्मा चाहिए भाई। तेरे को मैं चश्मा कहाँ से ला के दो अभी? ओ ये स्टोरी में था देखो, ये तीनों सेनापति ढूंढ रहे थे उसको। ये क्या? उसको गॉगल चाहिए था। ये क्या हो गया? अब इसके बाउल से क्या हो सकता है? इसका ये निकाल के देना है। Hey. हेलो भाई। ओके। ओ तो तीनों लोग निकाल सकते हैं, तीनों एक दूसरे का हेल्प करेगा तो निकाल सकते हैं। अभी इसको पहले हेल्प कर। ओके इसको वैसे निकाल के देना है, ठीक है। ओके इसको ऊपर का निकाल के देना है। ये तीनों साथ में जब आएंगे तो हेल्प होगा। और इसको पहले जब तक मैं हेल्प नहीं करूंगा, जो फर्स्ट वाला हाथ में कटोरा लेके बैठा है, तो उसको हेल्प करना है। समझ गया। अब ये कटोरे का क्या यूज है भाई? ये क्या, इसमें कॉइन डालना है क्या? Wat je verzet aqui? Wat je verzet aqui? इसके बाद Ik op vakanties, hè? तेरे को कटोरे में खाना दिलाओ क्या भाई? ये साइड तो वैसे भी कुछ नहीं है। Hey, kan swish swish. अरे मैं हेल्प करने को तैयार है, उसको भी हेल्प करना है। अच्छा मैं सामने खड़ा रहेगा, तीनों मेरे पीछे खड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन पहले दोनों को हेल्प करना पड़ेगा। ये काटने के लिए कैसे भाई? यो भाई, काटने के लिए मिल गया। लेट्स गो, चलो तेरी हेल्प हो जाएगी ब्रो। रुक जा। ले बोला कच्चे बेग है। ले ये वो मिला था ना मेरे को। पक 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 पक। पहले उसकी हेल्प करते हम, काट वाट के देते उसको। Ik op vakanties, hè? अब देखो काकाशी। हाँ काकाशी के ये ले। ये भाई ये चीटिंग है भाई, क्यों नहीं हो रहा ये? काट के तो दे सकता हूँ ना। ये भाई मेरे पास टूल होने के बाद भी नहीं हो रहा भाई। ये क्या चूंटिया पंती है भाई। इसको तो नहीं देख सकता, इसको तो गॉगल चाहिए, इसको दिखता नहीं है चुम वो। अरे डोंट टेल मी ये इसमें लगाना है भाई। Sloni gubi reki. क्या बूबी बूबी क्या बोल रहा है भाई? बूबी बूबी क्या बोल रहा है ये? वो काट दिस भाई। अब क्या? Ruki Sloni gabi. ओके
ओके Krutocik. इसको खाना देना है क्या? Rok tako. अरे हाँ इसको दे देते खाना भाई, तेरे को खाना चाहिए ना, ले भाई। Riko Fukashi, eh? हाँ काकाशी है तो काकाशी, रुक जा। नहीं यार ये भी नहीं खा सकता लो अब। एक काकाशी एक बूबी बूबी करता भाई। चल मैं रख दिया भाई। ये क्या हुआ? ओ ये गॉगल में तो देखा ही नहीं, लेट्स गो। गॉगले मिल गया भाई, ले भाई तेरा गॉगल ले। ये ले ब्रो, पहन ले। दिखने लग गया ना 100x जूम। ओहो इसने ये बना ली। इसको क्या बोलते हैं वो चीज? Wat je gezegd aqui? मुझे सहते की। अरे घुमा के फेंक के मारना भाई इसको। Wat je gezegd aqui? सहते की चल रही है भाई, सहते की। चल भाई मैं तेरा हेल्प कर देता हूँ, ले ले भाई आजा। थैंक यू ब्रो। अब क्या बोल रहा है ये? आजा भाई साथ में आ। हाँ ये निकाल के दे भाई, ये ऊपर वाला वो निकाल के दे। अच्छा ले। Maui. निकाल निकाल Wat निकाल je निकाल। gezegd aqui? अरे सेहत की नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा क्या तेरे से? ब्रो निकाल के देना ब्रो। ए ब्रो इसके सिर पे बैठ। अबे यार तू आ पीछे, मेरे पीछे पीछे आने हो रहा तेरे से। ये ले भाई। Kau perlu bicik terara po toilem. अरे डरा दिया। हाँ ठीक है ठीक है। Ah. अबे ऐसे मत कर भाई। अच्छा हाँ 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 हाँ। ले 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 भाई, लियो 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 लियो। अबे ये देना भाई। Lola. अरे ये चोमटिया ओ भाई। अच्छा 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 अच्छा। अबे वो बाहर मॉन्स्टर खड़ा है और बोल रहा है गेम खेल भाई। इसे ट्री के अंदर होल बना, वहां पे हेड डाल के रखा है और ठीक है भाई। ये खेलते कैसे है भाई? दबे उंगली मत कर रहे भाई। वही तो भाई क्या है ये? सब उतर गया रुक जा। अरे दीदी दे देना भाई। अब कैसे जाएगा आगे? अब कैसे जाएगा? भूत निके हैं? जीत गया क्या?
इसको आगे नहीं आने देना मेरे को, वो तो समझ गया। अरे आगे आ गया भाई, अरे गया मैं, गया 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 मैं गया। भाई वो आगे जाएगा भाई, हट भाई यार, उसको आगे नहीं जाने दे रहा यार, हट भाई, समझ गया। अच्छा उसको मेरे को पीछे 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 लेके जाना है जब तक वो अपने फिर से बेस पे ना चले जाए, समझ गया। चल ब्लॉकिंग्स ब्लॉकिंग्स, ठीक है। अबे हट ना भूतनी के, और यार आगे नहीं आने देना उसको, आगे नहीं आने देना है, हट भाई। अबे यार अब मेरे को पीछे में पीछे नहीं जा पाएगा क्या शिश भाई, यार इसमें पीछे नहीं जा सकते, वक्त ससुरा यार। अब वो आगे आगे जाएगा क्या फायदा भाई, हो गया, जीत गया, वो जीत गया। अच्छा ब्लॉक कर रहा था मैं उसको, भाई समझ गया गेम कैसा है, गाट इट। देखो पहले इसको यहाँ से ऊपर से मतलब अपने एरिया से ब्लॉक करना, ठीक है। चलो इतना ब्लॉक हो चुका है, अब वो ऊपर आ रहा है तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा पास आता हूँ ताकि वो आगे नहीं आ पाए। अब मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला इसके सामने नहीं जा पाएगा तो मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ, इसको पीछे जाना है, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ ब्लॉक कर दूंगा। अब यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है वो, तो उसको और पीछे जाना पड़ेगा। सी अब वो यहाँ पे ब्लॉक हुआ, अब मैं यहाँ पे ब्लॉक करूंगा इसको भूतनी को। अब मैं इसको यहाँ ब्लॉक करूंगा, अब मैं इसको यहाँ ब्लॉक करूंगा। नहीं तो जाना कहाँ चाह रहा है भाई, यहाँ पे ब्लॉक, ओके। अरे हग दिस हग दिस हग दिस भाई। अब मैं जैसे ऊपर, अब मैं जैसे यहाँ पे आया यहाँ पे जाऊंगा, वो यहाँ पे रख देगा, फिर वो अंदर चले जाएगा। सी अबे गाइस भाई, गए भैंस पानी में, हट भाई, वक्त ससुरा, फिर से करना पड़ेगा इसको, भाग भाई। एक मूव एंड यू आर आउट ब्रो। और यार आ गया रे, गलती हो गया भाई, गलती हो गया भाई, गया भाई मैं, हट भाई। यार है इजी बट थोड़ा यू नो, अगर मैं एक भी मूव हक दूं ना तो गया आराम से। माय ऑब्जेक्टिव इज टू ये किंग जैसा जो देख रहा है वहां तक नहीं जाने देना, कुछ भी हो जाए। ओके ओके, मैं इसको ऊपर पकड़ूंगा थोड़ा बहुत, लेट्स गो। अभी इसके आगे तो नहीं, ये यहाँ पे आने का कोशिश करेगा भाई। अब ये यहाँ पे आगे तो नहीं आ पाएगा ये, चलो जीत गया क्या, लेट्स गो, जीत गया, चल दे दे।
अरे चीटिंग कर रहा, थैंक यू थैंक यू। अरे वो दे वो दे वो दे, थैंक यू। चलो हो गया। Coco. अंदर जा अंदर जा अंदर जा अंदर जा। Coco. अरे उंगली क्यों करता भाई उसको? Oh, hoi hoi. Coco. 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 बाहर आ, इसको उंगली कर, Coco. Coco. इसको उंगली। Coco. निकल 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 निकल, भाग 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 भाग। Maui. Você fez certo aqui. रुक। ना यार ये तो नहीं हो पाएगा। फिर ये किस चीज के लिए मिला है मेरे को? मे बी इसके लिए मिला है। Fico focashi, é? हाँ ककाशी ककाशी रुक जा। आई थिंक ये तेरे काम आ जाएगा। नहीं ये अरे फिर इसका यूज क्या है डांट का? Ei, cara swish wish. अरे समझ गया, तीनों लोग चाहिए। एक का मैंने सॉल्व कर दिया, एक का सॉल्व करना बाकी, तेरे को भी नहीं दे सकता। यहाँ पे कुछ होगा, तेरे को देता हूँ। अब इसका यूज कहाँ है? Maui. Você fez certo aqui. आइडिया लगाओ सर, कुछ तो आइडिया लगाओ। इस चोमटे को डांट मारो क्या? डोंट टेल मी इसको डांट मारना है। मारा? नहीं नहीं इसको डांट नहीं मारना। मेरे को कुछ ज्यादा हो रहा है। उसको उंगली जाकर उसमें कर, नहीं हुआ वो ट्राई किया, नहीं मिल रहा है। देखो उंगली करने को देख रहा हूँ, नहीं हो रहा है भाई साहब। कोको यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा। तुम नहीं यार, यहाँ पे नहीं है वो चीज। आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग यहाँ पे। इसके ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, इसके Ruki Shloni Gabi. यहाँ पे तो मैंने भर के ये इसको काटना है मेरे को कैसे भी करके। ना इसको भी ये नहीं लग रहा। तू ले ले भाई, नहीं तो तू ले ले। ओ ये होगा। Você fez certo aqui. अरे सहते की रुको जा। आई थिंक ये होना चाहिए। अरे यही था, थैंक गॉड। चलो लीवर टाइप का काम करेगा वो। अब अबे इधर रुक तू। Hoje vai é jogo por aí. हाँ खड़ा रहे उसके ऊपर। हाँ तेरे को उड़ा था, रुक जा। उड़। हाँ तू वही रुक, तू वही रुक। मैं लीवर खींच के आता हूँ। नाइस वन। अबाबे गोलमाल पिक्चर याद आ गया। अबे ये देख, इसका यूज क्या है लेकिन अभी? ओ समझ गया, वो काटने के लिए यूज होगा आई थिंक। अबे ये ला काकाशी दे मेरे को। ये काम रह गया भाई काकाशी के पास। हाँ काट ले 20।
ओके, अब क्या? Hé, je me TV. वेरी गुड। चलो तीनों का हेल्प कर दिया। अभी मैं तुमको ये निकालने का मदद करता हूँ। चलो हाथ लगाइए। Male. आवे 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 आवे। 1 2 3 गो। 1 2 3 गो। 1 2 3 गो। ओ, ताकत लगा बेस की आँख। स्टैमिना बड़ा भूतनी के। मेरे को लगा वो स्वॉर्ड उड़ के मेरे को भाई छोड़ दे। तेरा भाई फाइट करेगा आप। ये लेट्स गो लेट्स गो। करामतें करते हो, ये क्या किया भाई साहब? ज्यादा मजा आ रहा है तेरे को? हाँ, क्या करोगे? ये अब क्या? अरे तुम लोग कुछ तो करो। हेलो हेलो, अब क्या? उड़ी उड़ी कर तू। हेलो हेलो हेलो। भाग भूतनी के, भाग 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 भाग। ससुरे गुंडा बनेगा, एरिया का गुंडा बनेगा तू। भाई साहब, भाई एरिया का गुंडा बनेगा सोच रहा था। आइए ओ भाई, बढ़िया भाई। देखो अच्छा था कि नहीं? गेम बताओ कैसे लगा? अच्छा था कि नहीं? दैट्स द डेमो वर्जन भाई। मजा आएगा नहीं बोलो? ओ यू कैन बाय दिस गेम। अगर तुमको खेलना है तो तुम बाय कर सकते हो। लेट्स गो। अब हम वी विल बी शिफ्टिंग टू अनदर गेम विच इज कॉल्ड, चलो ये हो गया। दूसरा गेम कौन सा? हम लॉस्ट इन प्ले खेल रहे हैं। अभी हम खेलेंगे असेंबल्ड, नॉट एवेंजर असेंबल्ड बट असेंबल्ड। इसको हम करते हैं बंद, इसको हम करते हैं कॉपी पेस्ट, एंड दिस गेम विल बी लाइक अ वर्टिकल। ये थोड़ा वर्टिकल लेवल पे होगा तो समझ जाओ। आजा भाई, तुमको ये गेम ऐसा दिखेगा। इसको मैं एक्सटेंड कर दूं क्या? मेरा नाम निकाल देता, रुको यार थोड़ा। नाम निकाल देता और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। थोड़ा सा जुगाड़ लगा, फुल वर्जन दिखा। अरे जरूर भाई। देखो इसमें थोड़ा तुमको नॉस्टैल्जिया हिट होगा ये गेम में, सच्ची बता रहा हूँ। सो ये गेम प्रॉपरली वर्टिकल होगा तो देखना। मारिया मिक्स कैसेट है, कैसेट बोलते हैं इसको। लगा जा। टिंग 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 टिंग। हेडफोन्स, ये हेडफोन लगा दिया। दिस गेम इज बेस्ट प्लेयर विथ हेडफोन। सो अगर तुमने हेडफोन्स यूज नहीं कर रहे तो डेफिनेटली हेडफोन यूज करना। Let's go. After a year on the road, I thought I'd get tired of traveling. The Achha. endless clatter of railways, highways, There's and everything in between. between. But as my train pulled into the station at Bellariva,
I felt every bit as excited as the first day of my journey. Oh. A whole year. It felt like a It's like a lifetime. lifetime. The places I'd seen, the people I'd met, of course, the forgotten treasures I'd given a new lease of life along the way. Okay. I'm a restorer by trade. Bringing our most beloved possessions back to life is what I love to do. I've been traveling for months, working my way from one town to the next, fixing everything from family heirlooms to VCRs. फैमिली एयर तो VCR था, VCRs के बात कर रहा. Bella Riva was my chance to take a break. Unfortunately, that would have to wait until after I'd unpacked. Let's unpack it. ओ भाई. I think ये खुल. ओ भाई साहब. That's nice. I picked up these sunglasses on my last stop. Hopefully I'm cool enough to pull them off. The tools of my trade. No hope of restoring things without these. अच्छा इसको लॉक है. I saw a guitarist wearing these at a show once. Rock and roll repairwoman at your service. सब बाहर निकले, पासपोर्ट हो गए. My passport. Not many blank pages left now. सनग्लासेस निकाल के रखता हूँ. इसकी Who doesn't love a कोम. scrunchie? Practical and stylish. ये क्या है? फोटो है उसकी. ऑब्वियस थिंग है. मारियास रिस्टोरेशन. Looking forward to taking more close-ups of my fingers with this. ये इसके डॉक्यूमेंट्स. ये My इसके favorite कपड़े. overalls. These will never go out of style. ओ भाई साहब. Completed. Finally, I'd made it to Bella Riva. I'd come for the food festival, taking place in a few days' time. After living off TV dinners and instant ramen for the last few months, I was craving a decent meal. यार आई होप मैं तुमको ना ये गेम मतलब ऐसे लेवल पे दिखाता. मतलब अभी ये मैं जैसे देख रहा हूँ ना फोन पे वर्टिकल में, वैसे काश मैं तुमको दिखा सकता. अभी मस्त लगता देखने में. Of course, I'd need to earn enough money to pay for it, so I figured I'd head out the next day and find some work. Find some work. My parents never wanted me to go. They wanted me to stay in their shop, The shop and have a simple and stationary life. I knew there was a world out there, beyond the four walls of our antique store, that I had to be a part of. I daydreamed constantly about the weird and wonderful places each of our antiques came from. I loved figuring out their stories, revealing the memories hidden beneath the screws and wires. My story in Bella Riva began with a little girl now. and a voice Little she was girl. longing to yeah. hear. वो वहाँ का मतलब वहाँ का एक्सेंट है वो. अच्छा है, अच्छा. Arrival. Oh done. ये क्या है? Minato. Let's play. इसमें पता नहीं कितने चैप्टर्स हैं. देखना It was पड़ेगा. my first morning in Bella Riva, and I couldn't wait to leave my hotel and explore. It was a quiet town, its streets and alleyways basking peacefully in the hot morning sun. यार ये कुछ ज़्यादा है, ये नहीं है. मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि प्रॉपरली बैठ सके. अब बैठा है भाई, ये अब बैठा है इसकी यार. In the main square, meanwhile, preparations were underway for the festival in a few days' time. As I handed out my flyers, I wondered what the people of Bella Riva would need me to fix. So far, everything here seemed perfect. Perfect, वही तो. I was starting to worry I'd made a mistake when I felt someone tapping me on the back. Hi, I'm Izzy. Do you know how to fix things? ओ भाई. It was a little girl, maybe 7 years old, who must have gotten hold of one of my flyers. She rummaged around in her backpack until she hauled out a battered red cassette deck. अरे यार. My tape is broken
and I can't make it work anymore. VCR वाला उसका वो है हेडफोन वाला वो होता ना एक I tried रिस्टोर to- इट लेट्स गो इसको रिस्टोर करना है अभी भाई यार ये कितना बढ़िया लग रहा है यार मैं इसका फोटो निकाल के मैं अपने मतलब वॉलपेपर बनाऊंगा इसको बहुत बढ़िया है ओ भाई Why did you do that? Oh, I don't know. इसका बैक निकालना है Aha! Bat- Those batteries look like they need replacing. Luckily, I have some spares. बैटरी निकालो इसमें लगाओ इसको लगाओ भाई साहब चलो डन ओके ये इसमें लगा दिया लेट्स गो डन Will you dream a dream for me? If I sit by your side, Yes, and it hold restored. you Let's so go. tight. Know that I will always love you, even though we both know that we must say goodnight. Good night, my darling. नाइस When it नाइस finished, Izzy picked up the tape deck and tucked it carefully into her backpack. Thanks, Maria. You're the best person at fixing things ever. No problem. Who was that singing? They're very good. It's my mum. She's not here anymore. ओ Izzy इसकी trailed मॉम off. सिंगर थी It ये was the बच्ची kind की of silence a cassette tape would never be enough to fill. When Izzy's friends called for her, she dug deep into her pockets, looking for something to pay me with. Eventually, she produced a grand total of a stick of gum, 3 mismatched buttons, and a yo-yo. उसको पे करने का देख रही है भाई साहब क्या क्यूट है यार I usually preferred a check, but Izzy looked so serious, I wrote out a full receipt. She seemed like a happy kid, but beneath it all, part of her life had been shattered. Part I wouldn't be able to fix. नाइस वन रे नाइस वन Shattered Part 3 Let's go My first repair complete, I spent the rest of the day doing small jobs in and around the square. तो ये राइट नाउ दूसरे शहर में गई है इसको अपने फैमिली बिजनेस इन द सेंस अपने शॉप में रह के कुछ करना नहीं था तो वो दूसरे शहर में गए वहाँ पे लड़की के टकराए उसका कैसेट रिपेयर किया और अभी आगे चल रहा है I was exhausted when I got back to my hotel and found a message asking me to make one more visit. विजिट The address led me to a quaint little house, a stone's throw from the beach. Bathed in the evening light, it looked beautiful, in spite of its flaking paintwork and आई chipped थिंक इसको tiles. कोई तो मिलने वाला है The front door was opened by a harried-looking man, still dressed from a long day at the office. Are you Maria? My name's My name is Joseph. I'm Joseph. Isabel's father. Isabel's father ओ इसको कोई फ्रेंड मिलने वाला आई थिंक I'm so sorry she bothered you this morning. Please come in. I'd like to settle up properly. On the mantelpiece, I saw the remains of a broken statue. Statue. Without I think thinking, we I have to picked out fix the the fragment. statue. I think My father's my statue. father's statue. What's left of it, at least. Yet another way I'd have disappointed him. It survived 100 years in this family. But 5 minutes with Isabel and... Do you think you can salvage it? Salvage it. देखो
फिक्स इट या मतलब डिफरेंट वर्ड यूज किया ओके सो अभी हमको इसको फिक्स करना है लेट्स सो Will you be able to see the glue afterwards? I don't want people seeing the cracks. ओके सो नहीं ये नहीं लगेगा इसके ऊपर Sometimes I think my daughter should come with a warning label. अच्छे से करेंगे भाई काम अच्छे से करना है यार कुछ नहीं छोड़ना एक एरिया भी नहीं छोड़ना है काम ऐसे करोगे सामने वाला बोले भाई क्या काम किया चलो ऊपर का लगा दी सभी इसका ऊपर वाला आई थिंक ये पार्ट लगेगा यस अभी इसको ग्लू लगाना है थोड़ा बहुत लगाइए ये चलो ये लगा दीस अभी इसका ये पार्ट यहाँ पे लगेगा Is this glue really strong enough to hold everything together? I don't know you give me the glue मेरे को कैसे पता तू डुप्लीकेट कंपनी का ग्लू यूज कर रहा है कि कौन सा यूज कर रहा है चलो लग गया अभी क्या बचा एक हाथ बचा है ना उसका यस लग जा जल्दी चल ब्रो लेट्स गो डन अरे और एक बचा है पैर बचा है भाई इसका नीचे का पार्ट बचा हुआ भाई जल्दी जल्दी चाय वाय भी दिया देख रहे हो चाय में ग्लू मत मिस करना मैडम चलिए डन भाई दैट्स ब्रेकिंग कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है हाँ ना वही तो अच्छा लग रहा है वही तो देखने अच्छा लग रहा है डन Thank you, Maria. It looks as perfect as it ever did. My father wanted me to make something of myself. He didn't have time for anything less. As Joseph put the statue back on the shelf, it nudged against the family portrait stood proudly next to it. So he was Bellariva's mayor. And that was Izzy's mom. They must both miss her so much. इससे तो डर मेयर को जाके हेल्प किया भाई कितनी रीच है मैडम की नहीं Sorry, I'm a little tired. I've been working late getting things sorted for the festival. There's only a few days to go. I'm working Looks like late. I'll be working late. Again? When I told my parents I wanted to leave, they always found an excuse to be busy, to avoid talking about it. I guess keeping themselves occupied was their way of pretending it wasn't happening. Joseph's work must have been taking up so much of his time. But maybe that was what he wanted. I just hoped he was finding enough time for Izzy too. ये भी वही सोचे मतलब वो लड़की के पर्सपेक्टिव के बारे में सोच रहे हम लोग ने जिसका कैसे ठीक किया ना इसकी मॉम जो सिंगर थी जो आई थिंक इनके साथ नहीं रह रही है बाहर है कुछ काम के लिए तो ये अभी ये बोल रही थी कि बड़े लोग मोस्टली क्या करते हैं वो काइंड ऑफ ऐसे बताते कि मैं बिजी है क्यों बिकॉज वो सिचुएशन को इग्नोर करके आगे जाने का सोचते मतलब वैसे वो उसके वे में सोचने का देख रही है लड़की टेलीफोन अपलोड स्पीड ही नहीं मिल रहा प्रॉपर यार हट भाई रिफ्रेश यार क्या बोलूं भाई अपने
यार फॉर सम रीजन इंटरनेट ना आज प्रॉपर चल नहीं रहा है यार। हट भाई, भाई ये नहीं पसंद यार। मैं ओबीएस खोल के बैठा है, मेरे इधर पूरा रेड रेड चल रहा है। मैंने वाईफाई को रिस्टार्ट किया अभी, थोड़े 1 सेकंड के लिए तुम्हारे लिए बफर हुआ होगा। अगर अभी स्टेबल होगा तो बताना। स्टेबल इन द सेंस जब तुमको म्यूजिक सुनाई दे रहा है ना, म्यूजिक बीच में कट नहीं होना चाहिए सुनते वक्त, तो स्टेबल है। क्योंकि मेरी तरफ भी स्टेबल बता रहा है। हो गया ठीक। ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट डिस्कनेक्टेड। My second day in Bellariva dawned bright and Bellariva में clear. गई है। Another beautiful sunny morning. Walking into town, I passed cafes overflowing with customers cradling their morning coffees. I stopped, breathing in the smell of roasted coffee beans and freshly baked pastries. I was about to go inside when the owner of Carmen's, the cafe next door, stopped me. Hello, Maria. Were you here yesterday handing out flyers? I have a job for you. I have a job for you. Her place was petite, tucked between its competitors as if hoping they wouldn't notice. Judging by the empty tables inside, though, her potential customers hadn't noticed it either. It's a bit slow today, but we're just getting started. I'm sure it'll pick up soon. As Carmen chatted, she walked over to the counter and returned with an old rotary phone. At least I've got plenty of time to practice my recipe for the festival. It's a new special I've been working on. I was hoping to call my sister for some seasoning tips, but it won't connect. Can you see if you can figure out what's wrong? अभी हमको इसका टेलीफोन रिस्टोर करवाना एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, तो लेट्स गो। लेट्स सी फोन में क्या प्रॉब्लम है। पहले फर्स्ट एवरीवन वी हैव टू डू इज स्क्रू ड्राइवर से बैक खोल, बस किया। इट्स वेरी इजी। Obviously, we'd normally be much busier than this. लेट्स गो। चलो बैक प्लेट निकल चुका है, यहाँ पे रख देता हूँ। You can fix it, can't you? I can't afford to replace it. ओ तो मे बी ओके। सो रेड रेड कुछ तो हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है? ड्रैग अ वायर टू द टूल बॉक्स टू डिटैच इट। ओके, इसके बेल्स गए भाई। अच्छा ओके, देखो पहले बेल निकाल देता हूँ, नए वाले बेल लगा देता हूँ। ओके, वायर डिटैच कर देता हूँ। These connections aren't quite right. I should check the wiring. चलो वायर तक कनेक्शन तो निकाल दिया। चलो ये हो गया। पूरा सेट हम डिफरेंट लगा देगा। लेट्स गो। ठीक है, अब ये लगा दिया हम, ये इसको ये लगाओ और इसको ये लगाओ। डन। Looks like this new circuit board is all hooked up. उनका सर्किट बोर्ड की लग चुकी थी अंदर की, तो सर्किट बोर्ड लगा दिया हमने नया वाला। एंड देन ये ऊपर वाला कवर था, ये लगाओ। डन।
आई थिंक होना तो चाहिए, अब हो तो गया। चलो ये हो गया। 2 3 Screws still need to be put back. 4 डन। मैम डन, इट्स डन, लेट्स गो। भाई इट्स सो इजी यार, मैं फटाफट कर दिया इसको। When I handed the phone back to Carmen, she seemed almost reluctant to take it from me. So it's all working now, is it? I don't have to Yeah. leave it to dry or let it cool down? ना Nope, कुछ it's नहीं। ready to go. It'll be Ready to ringing go, off yes. the hook in no time. That's if I can pay my phone bill anyway. And the rent and the suppliers. Anyway, take a seat and I'll be right with you. Your coffee's on the house. वाह भाई, इतना पूरा उसका फोन रिपेयर कर दिया, कॉफी ऑन द हाउस। वेरी गुड वेरी गुड। ना उस पैसा ही मत दो भाई, उसको पैसा ही नहीं देना। वेरी गुड भाई। I sat at one of the empty tables, while at the counter, Carmen had started dialing the phone. Hello! How's my favourite sister doing today? As she talked, Carmen became more and more tense. This didn't seem like a call for some cooking advice. वो तो है, पर कुछ एडवाइस कैसे देगा? I know I still owe you from last time, but I can't afford to take part in the festival if I don't pay. I could almost feel the eye roll at the other end of the line. ओ भाई। You don't need to be here though. Can't you just put the check in the post? When the call ended, Carmen brought me my coffee. Her मैं hands बड़ा trembled. इमर्सिव है, पता है? Sorry देख, about that. My sister's decided to fly in for a visit. Oh god, I have to get ready. क्यों भाई, इतना क्या है? Actually, I might have another job for you. Can you come by tomorrow? And that's the game, sir. We have officially completed the second game, the assembled mobile game. So अगर किसी को buy करना है, they can buy this game. We have completed. Let's go. अभी हमारा तीसरा गेम खेलेंगे आज का थर्ड गेम। और अगर किसी को बाय करना है गेम, इट्स अराउंड, पता नहीं, मैं ऑफ पे खेल रहा हूँ। लेट्स सी। जी थर्ड गेम है द रैट। अभी इसके लिए मुझे थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा। 1 मिनट। चलो, ये भी नहीं टर्न मारता भाई। भाई यार ये गेम पता है इन लोग। चलो अभी इसको मेरे को प्रॉपर अपने लेवल पे लाना पड़ेगा इसको। ओके, ला दिया इसको। एक मिनट देना, मेरे को पहले इसको लेवल पे लाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको मजा नहीं आएगा देखते वक्त। यू नो, देयर इज ओनली वन स्ट्रीमर जो गेम खेलते खेलते सब सेटअप करना पड़ता है उसको, क्योंकि हम चोमटिया है। हमको एक टाइम पे एक गेम नहीं खेलना, 3-4 गेम खेलना है, समझ रहे हो? सो यू कैन बाय द गेम, नहीं तो तुम ट्राई कर सकते हो, ट्राई फॉर फ्री। लेट्स गो, स्टार्ट न्यू स्क्रीन प्ले। सो अब हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे जो कि है MGB गेमी। लेट्स गो।
गेम स्टार्ट हो रहा है। ओ भाई, भाई ट्रेन देखो कितना बड़ी थी। डायरेक्ट स्टार्ट द गेम, लेट्स गो। हॉस्पिटल। भाई क्या हो गया इसको? ओ भाई साहब, I have a confession. I love crappy romantic comedies. It's Yeah, yeah. okay. I can't help it. I love them. All those movies have that scene, you know? The girl is at her wit's end. She's been crying her eyes out, her makeup. तुमको साउंड कम सुनाई दे रहा है क्या कि मैं बढ़ा दूं इसका साउंड का? Which is where ग्लोबल वॉल्यूम में मैक्स कर देता हूँ क्योंकि साउंड बहुत कम आ रहा है। Ryan Gosling knocks on her door to coax her out. Miss. Shish. Shit. That sounds nothing like Ryan Gosling. See, this is the problem with my life in a nutshell. It's not romantic, and it's certainly not a comedy. Comedy. All right, where am I? What happened? Oh yeah, the hospital. ये हॉस्पिटल में क्या कर रही है डायरेक्ट? And then really, really hot. And I guess that I fainted. And that's putting it mildly. I'll be alright though. Are you sure? और ये बाथरूम में गिर गई क्या? As if I could be sure of anything. Still, I should probably update my guardian angel. Actually, now that I think about it, maybe there's some... Yes, I'm sure. I'm good. I just had a little bit of a moment. A big moment. But it's over now. Sorry, I ducked out. I'm already feeling much, much better. भाई मेरे को लगा वो पीछे जानता छोड़ो। I can hardly tell her the truth, can I? Most people don't actually want you to be honest with them. Oh, I apologize, Dr. Giagana. I just vomited up my breakfast. I had it all over my chin. It wasn't a good look. It's hardly my fault. I haven't been handling stress very well. बढ़ा दिया। मैं और बढ़ा देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं सबका साउंड बढ़ा देता हूँ। इंडिविजुअल जो भी है म्यूजिक अदर साउंड भी मैक्स में अच्छा लगेगा। I'll be out in just a second. Those weren't here before. Do you think they have any idea where they are? I'm sure this comes as a shock, but it is crucial that you understand the situation. Your mom had a brain aneurysm. Do you know what that means? पता नहीं ब्रेन Mom. एनेरिज्म। Funny. I could never get myself to call her mom. She's You? always been married to me. As I understand it, it's a weakened artery wall? Correct. And that artery ruptured, which caused a hemorrhage. It is Oh, a my serious God. situation. We need to prepare for whatever happens next very quickly indeed. I've watched enough Grey's Anatomy to know. Serious? What can I do? Anything related to medical care will be my team's responsibility. But you are her trusted advocate. I'm So sorry, you should be her what aware. now? Do you not remember? This is the reason we called you. We have your name and your number, which means that you signed the release. I have no idea what she's talking about. And since she is not able to express her will, it falls to you to speak on her behalf. But I presume you discussed that when you went through the process. So you must know that there are a number of options to consider. भाई I don't believe it! She put my name on the form without asking me. She must have forged my signature. ऑब्वियसली It's भाई वो hardly a मरने आ रही तो surprise. She's किसका always done that kind of Christ. stuff. But I'm ठीक है not making any important decisions. बाहर की हालत ऐसी है भाई, देख रहे हो? The phone call from the hospital, that was a surprise. I'd never have thought anything so serious would happen to her.
Anyway, when she's back on her feet, she's going to have a good laugh about this. The idea of me deciding on her behalf. I've had my share of this kind of responsibility, and it didn't turn out well. However, my dear mother doesn't seem to understand. मैं फॉर सम रीजन मैं इसको क्यों हेट कर रहा हूँ पता नहीं, ये कैरेक्टर को मेरे को अंदर से हेट करने का मन कर भूतनी की. Of course, Jan will have her say, and if we disagree, all hell will break loose. Pitting us against one another at a time like this, that's exactly what my mother would do. I feel trapped, like a fish in a barrel. Oh, come to think of it, I would love that. A 30-second memory, and not a care in the world. Fear me, sharks, for I am the terror of the oceans. That reminds me of the nickname I got during swim class in middle school. अच्छा जी. Sea hag. Haters, all of them. I'm sorry, Miss Fortin. कितना सोचती है भाई दिमाग में. I went back to my maiden name. I'm sorry, that wasn't in your file. Listen, I understand that this is all very sudden, but we don't have a lot of time. We need to focus. We do indeed. Why do you think I'm here? Let me be clear, miss. I'm not your enemy. I'm just the on-call physician. We can work together to help your mother, or we can wait 7 hours, 22 minutes, and 17 seconds. And then I can go home, and you can pick up the conversation with Dr. Zorzan instead. But I should warn you, Zorzan is an old coot. No, you're right. I'm sorry. Okay. I guess I deserve that one. It's okay. I understand. It's not an easy situation. Our major concern right now is the hemorrhage is spreading. There's the risk of a cerebral vasospasm. That is a complication which could severely affect her brain. Is she going to die? We're doing our best to make sure that doesn't happen. There could be long-term consequences. This sort of event severely impacts the body, and mental functions may also be impaired. I need to know if you and your mother will be able to deal with that sort of complication. लॉन्ग टर्म बोलता हूँ, इसको थोड़ा एनिमे बनाते हैं. No, it can't be. Holy fucking shit. I'm not ready for this. What do you mean? To be completely frank, if we're able to pull your mother through this, there's only a small chance she'll be like she was before. Small? How small? Smaller than that. In all probability, she will never be quite the same. Oh, Some people would prefer not to keep living under such circumstances. They'd rather their medical care were geared more around letting go as gracefully as possible. What I need to know is, what would your mother want? I अगर don't know उसकी how to माँ answer that. kind of Last time she told me she wanted something, it was... अगर उसकी माँ काइंड ऑफ बच भी गई, प्रोबेबिलिटी जो कि बहुत कम है, वैसे सिचुएशन में काइंड ऑफ जिंदा रहना तो उससे अच्छा, मतलब बोलने का इनका ये भाई साहब भगवान. To be in MoMA. Excuse me? MoMA? The museum MoMA? in New York. अच्छा. Mise Demange. Wait, your mother's that Marie Demange? The artist? ओ भाई साहब. Ah, there it is. Works every time. Works every time. भाई Once साहब. people figure out who Marie is, their whole demeanor changes. They feel like they know her somehow. भाई साहब, इसकी माँ बहुत फेमस है, पैसे वाली हो, इसको ओ भाई छोड़ो बे. Of course, they're completely wrong. Oh, she takes them in with her dog and pony show, but there's a world of difference समझ रहे हो, ज्यादा between पैसा who होगा she तो is ऐसा in होता है. public and in private.
And if this doctor knew Marie, the real her, she would realize how ridiculous her question is. Yeah, the Marie de Mange. And I'm her assistant, I guess. Sister. I handle the business, the management, the press, so that she can be fully dedicated to her art, you see? Anyway, the other day, I got a call from Centre Pompidou. They want to do a What? retrospective on her life and work. Can you imagine? The billboards, the crowds, the press, the whole shebang. And I'm like, hell yeah! I hop into my car, I rush over to tell her, I run into the workshop, yelling, and you know what she said? Did you hear from Moma? Ugh. Someone had told her they were considering her self-portrait 8, a canvas from her latest भाई ये weird series. game है तो अच्छी बता Her रहा हूँ. whole exhibit in Paris, on the other hand, she didn't care. So, that's my mother. Most of the time, I don't know. I have no idea what she wants. I know what I'm asking isn't easy. I can give you a little time to think. Like, that would change anything. Yeah, I suppose. I suppose I need to think about it. I'm sorry, I gotta go. लैग नहीं हो रहा गेम का जॉनरा है वैसा है. I know what she'd say. That I'm running away. What did she expect? That I just show up and what? Decide भाई whether क्यों she भाग lives के or जा she रही है dies? भाई ये उसकी माँ. I don't even know how I'm supposed to make it to the end of the day, let alone. भाई काट उसकी माँ को ब्रेन हेमरेज और ये देखिए. वाह भाई ये. Oh shush भाई. Oh shush. I remember Diane and I found an injured bird in the backyard. It was tiny. Artists are always weird, bro. Creator, I mean. I think it was around the time Marie had set up her new studio in the sunroom. Now that I think of it, that was also my first experience with death. In fact, I also had a really weird dream that night. Something about that day always seemed off. I never figured out why. And why am I thinking about this now? Because तेरा एक्सीडेंट हो गया ना अभी तेरे को तेरी माँ की याद आएगी. Tab left to rewind or tab to advanced. ओ भाई साहब मेरे हाथ में आगे जाना है पीछे जाना है. Yeah, Diane was so proud of packing her own suitcase. Her father came to pick her up that afternoon. She spent the weekend with him and her stepsister. I was a bit jealous, but also happy to have some time with my mother. Just us. ओ भाई साहब. I think I saw a big shadow moving down the hallway that night. I imagined a monster bird was visiting visiting us. us. For a long time, I thought it was just a strange dream. भाई मेरे को गेम स्ट्रेंज लग रहा है बहुत ज्यादा. मजाक से हट के भाई. ओह Do you recognize it? This is the mobile that Marie made me before I was born. It's exquisite and Delicate. I loved it. And you did too. I think I still have it in a box somewhere. भाई साहब वियर्ड और यूनिक गेम है भाई साहब.
वो रहा. Marie told us she'd take care of the bird, so we went back to playing. I never saw it again. And when I asked what happened, she said it just flew away. I was so relieved. Oh, Back then, Marie wasn't very Painting. well known, but she was hardworking. She had But just started a series on birds, actually. They were all over the house. She considered them a symbol. okay. A postmodern symbol of anti-anthropic levity. Classique Marie. यार ये वाला तो हो गया ना. और क्या बचा है? ओ ये The रहा. nest with the bird was obviously young. It was a big fall. It must have been badly hurt. I didn't realize it at the time. Marie was always quite passionate about birds. So I suggested we keep this one as a pet once it got better. I could already imagine it. A beautiful cage tucked in the corner of the studio. She got so mad. At the time, I didn't understand why she reacted like that. But now, क्या डन हुआ कि नहीं हुआ ये? कुछ छूट रहा है क्या? मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है? देखना ब्रेन है जब भाई क्यों पता है उसका जो सोच था ना भाई मेरे को बैठ ही नहीं रहा है now I भाई. know for certain that someone was in the backyard that night. And since Diane was at her father's, it must have been Marie. What was she doing out there? Maybe I am like मतलब तुम्हारा सोच मत. अरे बफरिंग तेरी भैंस की टांग भाई. Maybe Marie killed the bird. That's what she was doing out there in the middle of the night, burying it in secret. And it might sound strange, but I also understand why she did it. हैं? कुछ ज्यादा ही नहीं पता चल रहा है इसके बारे में. Marie is really an astonishing person, you know. She's usually hard, but also she could be vulnerable sometimes. She couldn't stand seeing the bird injured. She knew it would never recover. It was too weak. I remember she said, not being able to fly, that's no life for a bird. She thought it would be better off dead. She could have just abandoned it, let things run their course. But I don't think she did. I think she killed it with her own hands. Sounds cruel, doesn't it? But that's just Marie. That's her outlook on life. She's all or nothing. आ गया मजा. नहीं आ गया मजा. ओ भाई पीछे चली गई. What I need to know is, what would your mother want? ओह इसका एक्सीडेंट हुआ था. ओके मेरे को लगा इसका हो गया.
ये भी अक्कड़ी वाली है भाई. I'm not ducking out. Not this time. After all, isn't this what Marie wanted? I think. I think. My legs are shaking. Maybe I'm having another turn. I think I need a sugary drink. Understood. Do you need anything? Well, I need more coffee. But if I drink another one, my stomach's going to declare war on the rest of me. I just can't speak on my mom's behalf. One thing's for sure, she's a radical. She's all or nothing, all the time. I understand. It's hard to contemplate the idea of living with a disability. It's not that, not at all. If we were talking about me or someone else, I would say it's gonna be fine. You adapt. People do it all the time. They have to. Life's too important. I would say that. She wouldn't. I'm not sure that answers your question. She certainly comes across as rather forthright. You don't say. I've seen her on TV a couple of times. My father loves her. She's an extraordinary artist. In her interviews, she's so impressive, fierce even. It must be quite something to be the daughter of someone so talented. I've heard this one before. That's a polite way to say it can't be easy to have a nutcase for a mother. Yes, it's quite an experience. Doctor, do we know why this happened? We were just having dinner last night. She was fine. There could be a lot of factors. Family history, hypertension, alcohol consumption. I did have a pretty severe hangover this morning. Even past trauma, like a historic head injury. It's hard to say right now. All right, Miss Demange, I'll give you time to think. भाई Let's ये speak again in about 2 hours, if that works for you. Sounds good. Can I see her? Yes, of course. Let me find out her room number. ओ भाई साहब, this I is know it. what I have to do, what I should do. It wasn't that long ago that I could write this kind of scene without breaking a sweat. I step into the room, there'll be tubes everywhere, beeping sounds. The audience will know that it's serious. Then I start bawling my eyes out. I collapse on my mom's bed, pouring out snot from my nose. चू बेटी है बेस की, वह चू बेटी है, बहुत तेरी बेस. भाई दिमाग खराब हो रहा है भाई, इसका जो सोच है ना, जो हिसाब से भाई साहब मेरा दिमाग का दही हो रहा है अभी तक. Or maybe I'll be dignified, stony-faced, standing quietly in the corner. Close up on my face. They'll see I'm suffering deep inside. A single tear rolls down my cheek. That's exactly how it will happen. Or what should happen. There's just one problem. क्या प्रॉब्लम है? I really must. She probably needs me. ये प्रॉब्लम है भाई, ये प्रॉब्लम है. अच्छा I don't know why, but I can't open that door. अच्छा. It's always stressful to share an elevator with a stranger. Still, it could be worse. Hey, June. I could have to share it with my sister. Okay, I'm kidding. We love each other. Love giving each other a hard time. Okay, I love giving her a hard time. For instance.
did he do? Nothing? I haven't eaten yet. My blood sugar's low, okay? Come with me to the cafeteria. मेरा ब्लड प्रेशर दे बढ़ रहा है भाई तुम लोग की बात But सुन if you के. utter that stupid nickname one more time, I'll strangle you. There it is. She had me worried for a sec. कहाँ से ढूंढ के लाते हो ससुर ऐसा गेम? This food looks nasty. दिमाग का दही कर दिया Did you इसने. notice? Jan loves being in charge. She wasn't always like that. It started when she was a teenager. Some people get acne. She got authority. So, अच्छा जी. how's work? You know, scheduling, phone calls, spreadsheets. It's mind-numbing. There's no time to think. That's why I love it so much. How's your script coming along? Oh, अब मैं स्टोरी को नहीं बोल रहा है इसका कैरेक्टर को सुन के ना मेरा दिमाग I ये हो never रहा should है. have told her about it. स्टोरी I अच्छा guess I है had a वैसे. moment of weakness. I thought she would इसको worry as a less about enemy me if she character knew I बनाया, was but- working on something creative. But why did I even think she was worrying about it in the first place? She doesn't seem worried now. Better change the subject. And how are you? And how are you? Well, since you ask, So easy. I was doing good until yesterday. One of my idiot patients up and groped my ass. She's a physical therapist working with professional athletes. She अच्छा. spends her days massaging pretty boys with 2 brain cells and 0 self-control. She's the best in her field, I've heard. All the major soccer clubs are With fighting 2 over brain her. cells भाई. Probably because she has her own story. इसको देख इसको 2 ब्रेन सेल भी नहीं होगा उसका 1.5 हाफ ब्रेन सेल होगा जो हिसाब से इसने सोचा ना भी तेरे को नहीं बोल रहा ये जो डॉक्टर से बात कर दी इसका ब्रेन सेल्स हाफ ब्रेन सेल होगा. मैं हाफ भी बहुत ज्यादा बोल दिया. She almost became a tennis pro at 17 years old. She was really strong. And then there was some kerfuffle. I don't know what happened, but the league didn't have her back, so she just gave it all up. Oh, Jan, I'm sorry. Why? It's not my first rodeo. But that pathetic little virgin really pissed me off. Anyway, he has a broken hand now. Good thing he plays soccer, not volleyball. The worst part is, she's not joking. In other news, this place is so stressful. Everyone's way too nice. It is a hospital, Jan. I know. They should be scowling 24/7. इनको ये भी प्रॉब्लम है. सब लोग अच्छे से बात How करें. is वाह she? भाई. I haven't been to see her. I want to meet him. जिसने What are राइटर you ने waiting लिखा for? है ना. A singing telegram? Sorry, that was uncalled for. This whole situation, it's just a lot. Messed up हाँ. Yeah? Messed up बोल दे. Sounds like there's something else. Something else bothering you? क्या भाई? No, nothing else. Wanna bet that there's something else? Well, I guess, I did meet with the doctor this morning. अच्छा. She told me about your deal between Mom and you. And to be honest, I was shocked. Were you going to tell me at some point? I knew it. See? I knew that this whole trusted advocate thing would never fly. The only question is, will she believe me when I tell her I didn't know? Given the state she's in, I wouldn't bet on it. Look, I'm sure you're upset. Of course I'm upset. We just found out that Mom might die. Does that mean nothing to you? It does. Of course भाई it does. इनके घर पे It's कोई तो okay. हॉस्पिटल का I'm बेड पे handling पड़ा है. it. You know, इनको अपना I'm perfectly capable क्या of making पाक this करना पड़ decision. रहा है भाई. Just leave it to me this time. Oh my God भाई क्या बंदे हैं What's भाई. going on, June? I'm sorry. Something's wrong. Could be the grapefruit. दोनों wrong है भाई. It's really toxic. And, No, it's not the grapefruit. टॉक्सिक के बारे में कौन I बात don't कर रहा देख रहे recognize हो? you. You're different. Oh no. Ooh, she wants to talk. Seriously. अच्छा. That's just her way to cope with stress. She needs to dissect things to understand them. And she needs to understand things in order to control लड़की वाली them. बातचीत अच्छा. So, what's the play? Idiot or goldfish? Idiot. It's worth a Obviously. try. Jan is defenseless against my fine brand of humor.
damn, you noticed. It's just a little filler here and there. Just brightens up the whole face, you know? You can only dodge so many serious conversations. वॉइस with ओवर your अच्छे है stupid इसमें, jokes. वॉइस ओवर काफी अच्छे है I कंपेयर guess टू I can मोबाइल get out गेम of के this लिए. one. You're acting like some kind of robot. You're all closed off. And you clearly aren't considering how I feel about all this. तुमको ऐसे नहीं लग रहा है कि ये सब कुछ इन लोग मन में बोल रहा है? ऐसे मेरे को फील आ रहा है, पता नहीं क्यों. हर चीज इन लोग मन में बोल रहा है, ऐसे एक दूसरे को नहीं बोल रहा है. What's the game here? Where's the Jen I know? She's got some nerve lecturing me as though nothing happened. I'm not gonna lie, she's not entirely wrong. I haven't exactly been brimming over with empathy recently. It's not my fault, you know, it just makes it easier to get through the day. For me, at least. I'm not sure how anyone else manages. कितना बात करते भाई, सामने वाला सो जाएगा. Come on, quit it, Jan. I guess not thinking enough about you makes me egotistical, huh? In case you hadn't noticed, my life has been rather complicated of late. See? That's exactly the problem. And, okay, this is going to make me sound like a huge asshole yet again, but Achha. I'm used to that. I've been meaning to talk to you about this, so why not do it now? Oh. We're here for Mom, and you can see how hard this is on me. And yet, here we are, yet again, talking about you. What happened to you was awful. It really was. Absolutely horrible. Yeah. That was 5 years ago. It can't be 5 years. ओ भाई साहब भगवान, 5 साल की बात है, अभी दिमाग में रखा है भाई. ओ भाई, इसको पता भी नहीं 5 साल हो गए भाई साहब भगवान. Can be 5 years. It can't be 5 years. It was only yesterday. Why the hell is she bringing this up anyway? मेरे को लगा है भाई यही बोलेगी. मेरे को लगा है भाई. Where are you going with this? I don't really know. I guess I'm a little worried about you. I don't understand what goes on in your head and भगवान That इसको scares कोई me. दिमाग दो भाई. Why are 2 you ब्रेन like सेल this? नहीं, आधा Really? ब्रेन सेल दे दो, She's बस हो worried गया. about me? 1 ब्रेन सेल हो जाएगा. You had to go there, didn't you? You really, you can't help yourself. Whenever you can't control something, you just hate it. don't you? And so, pow, you attack. you're wrong, June. I'm just trying to help. You can't really tell me that everything's fine, can you? Do you think that throwing my little problems back in my face is going to help? Oh, wonderful! Wow! Oh, it's a miracle! I'm cured! Thanks for the therapy session, but I really have to go. Obviously, you can handle everything just fine on your own, so go ahead and take care of Marie. Wait, June! Don't leave, please! भाई ये प्रॉब्लम से I'm भागती है sorry. मैडम. I really need you. वो तो भी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं. बस ये क्या है भाई मैडम, इसको पहले प्रॉब्लम से भागना था, सिर्फ सिचुएशन को देख रही थी, एक्सक्यूज को भागने के लिए देख रहे. ऑनेस्ट. अच्छा, Should I be honest? I just grabbed the first opportunity to put up a stink so I could get the hell out of there. Of course I'm weird. And I can see how that might freak her मैंने out. बोला ना, देखो मैंने बोला ना, वो एक्सक्यूज ढूंढ रही है वहां से भागने के लिए. She wasn't भाई telling me that साहब because she भगवान. cares. That was her lashing out to hurt me. ओ भाई, ओ भाई, शंख. You know, Astrid, memory is weird.
The You game is suddenly good, remember यार, these सच्ची बता रहा हूँ. moments without knowing why. For instance, one day I visited a fishery. This was a year or two ago. I was writing the script for a promotional documentary about lobsters, a freelance gig for the Agricultural Chamber of Brittany. Truly the crowning moment of my career. Although for real, I loved writing it. अच्छा. It felt good, going outside, meeting people. And lobsters are fascinating animals. अच्छा. Shall I tell you what I remember? अभी यहाँ से बैक फॉरवर्ड करना है थिंक हमको. यस, ये सारी चीजें मिलेगी. Lobsters. Their exquisite and delicate flesh is prized by the finest gourmets. With a little garlic butter, lemon, or mayonnaise, they're delicious. They're on every great chef's menu. Lobsters are a symbol of wealth and luxury. Lobsters, which allows them to never stop growing. Lobsters, this natural barrier is so strong that lobsters have no natural predators. In short, no one can mess with lobsters. Except humans, of course. ये बात है. ओ भाई. Female lobsters may lay over 100,000 eggs in their lifetime. They keep each clutch underneath their tails for several months. 1,000 eggs? And when the eggs finally hatch, out come a profusion of larvae just a few millimeters long. Can you imagine? Over 100,000 tiny little astrides. ये तो नहीं पता था. That was but I dug deeper. You can call me a lot of things, but I'm nothing if not conscientious. I learned a lot about lobsters that the Agricultural Council wouldn't have approved of. Ugly truths we'd rather hide. अरे हुआ कि नहीं है? ओ मिला. Lobsters don't age, but after a while their shells do. And if they can't make a new one, their current shell will wear out. It will split. Bacteria, fungi, and other diseases might seep in through these cracks. मतलब लॉबस्टर के अंदर वाले को कुछ नहीं होता है, बाहर उसका शेल खराब होने लगता है. वाह रे, तुम सोच रहे हो मतलब अंदर की चीजें कितनी अच्छी होती है. इसके लिए लोग Lobsters have a chitinous exoskeleton, but sometimes they feel trapped in it, so they molt. They leave their shells behind and expose themselves. Until their skin hardens again, the world is full of predators. Carnivorous fish, other arthropods, and humans, of course. Because when they've just molted, when they're soft, lobsters are their tenderest and their tastiest. यहाँ पे और कुछ बचा है? बच्चे तो रहने दो. अरे दो यार. Female lobsters may lay over 100,000 eggs in their lifetime, but few will reach adulthood. The larvae will be gobbled up by passing wildlife. The young ones will be poisoned by water pollution. Their livers filled with heavy metals and microplastics. And those who grow big enough will be plucked out of the sea by humans to end up on a fishmonger's stall. लॉबस्टर मैंने खाया था एक बार खाया है आई थिंक. अबे खत्म हुआ कि नहीं हुआ? और एक बार जाते हैं आगे तक, नई चीजें पता चलेगी. ये इसमें से मेरे को बाहर निकलना है फटाक से. Everyone loves lobsters. But to truly love them, first you have to cook them.
And to cook them, you have to kill them. There are Two two ways. ways, traditional or modern. The Traditional. traditional way is to chuck lobsters into boiling water. Alive. Alive or and wet. Their flesh burns. The air bubbles beneath their shell expand and burst their organs. It's horrible. Lobsters don't want to die, but the people who love them don't care about that. आगे. All this to say, being fake, writing pretty lies, that doesn't bother me. Between my clerical work for Mari इतना and बोलने का those तू PR खुद तो खाएगी gigs, ना. I learned to tune it out. No one wants to know what's in अच्छा my है यार head. ये गेम अच्छा है बट Maybe you do? इसके पर्सपेक्टिव ने मेरे को बहुत ट्रिगर कर दिया था बीच. Everyone loves lobsters, and that love is what's killing them. If no one loved them, we'd let lobsters live happily at the cold bottom of the ocean. Lobsters don't need to be loved. अरे खुद की माँ के तो फिक्र कर ले मैडम. To be honest, जैसे तेरा कैरेक्टर बना है लॉबस्टर की फिक्र पड़ी इसको. lobsters don't age. In fact, they could never die at all. If they just stayed in their holes, they'd never get sick. They'd never get harvested or trapped. Unfortunately, lobsters खाना क्या grow. खाएंगे? Maybe that's the big difference between them and me. अबे कितना वही देखो. अरे भैंस क्या. Lobsters have a chitinous exoskeleton that limits their growth. As soon as they shed it, they're in danger. Their Oh. enemies notice their weakness. They can smell it, like sharks smell blood. If they can Oh. reach a weakened lobster, they'll devour it. Science They'll tear class it is apart going. and feast on its flesh. I don't want to be eaten. बार बार एक ही वीडियो देखना जरूरी है क्या भाई? दिखाओ ना कंटिन्यूस बार बार दिखाओ ना यार. Female lobsters may lay over 100,000 eggs in their lifetime. अरे सुन And लिया you'll भाई. never watch them grow up. You might think that the sea is salty from all the tears Oh, shed by भाई साहब. lobster mothers, but they don't cry. What good would all that sorrow? मतलब इतने एक देने के बाद भी वो देख नहीं पाते. वो एक मतलब कभी देख नहीं ले. अच्छा भाई साहब. You know, Astrid, memory is weird. You suddenly remember इतना these तेरा moments without चेहरा knowing कितना why, अच्छा है यार. यू until लुक you ब्यूटीफुल realize बट it's सोच trying देखना to तेरी. teach you something crucial. बिहेवियर That day, पैटर्न देख वो ठीक कर. I learned that I सब needed ठीक to हो be जाएगा लाइफ stronger में. than a lobster, to हर never चीज molt, फेस नहीं होती. to never get eaten, to just hide in my hole. जितना जल्दी सोचेगी ना ये बहुत अच्छा हो Never जाएगा. cry. That's the only way that I could keep on living after you died, my little fawn. I don't want anything. I don't expect anything. अच्छा. I feel nothing. आई फील नथिंग. अच्छा भाई. Why are you like this? She's I feel right. nothing. I have been weird lately. Honestly, I'm glad she noticed. You're right. ओह. I am? Because I was starting to think that I was just being a dumbass. Oh, you're totally a ये dumbass. खुद को धीरे धीरे You ठीक कर can't दिया. just अच्छा bring है. up अच्छा Astrid's है. death out of the blue and throw it in my face. हम्म. But you are right. With her gone, something inside me is broken. अच्छा. I just don't feel anything. Everything just slides off me. I'm Teflon. Sealed off. Like a damn lobster. A lobster? And you're right. It's been 5 years already. But I'm still trying to figure out how the hell I'm meant to reconnect with my life. I understand. I mean, I know I can't understand, but I think I get it. Is there anything I can do to help? I don't think so.
Well, you can keep on being. देख रहे हो? But that's more of a public service than. इसने अपना सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज किया, सामने वाले बोलने का अपने पर्सपेक्टिव चेंज किया. ऑलवेज हैपेंड भाई. You know, बात करने आना I चाहिए लोगों admire को. you. Sure you do. You've always been the sensitive one. That's classic Marie right there. चलो I'm गया इसका. sensitive. By which she means weak. Not strong enough for the ओ world. भाई नहीं Obviously, I रे. pale in comparison to सेंसिटिव the मतलब formidable वीक नहीं Diane. होता. ओ भाई. सामने वाले का सेंस. ओ भगवान इसको दिमाग दियो भाई. पूरा मत दियो. 0.75% सेल देना भाई, ज्यादा मत देना. पूरा भी मत देना भाई इसको सेल. Yep, that's me. So fragile. That's not what I mean. Mom raised us to bite before we get bitten. That was the only way out she could see. And I guess I took her literally. But you weren't like that. You knew how to listen. You got people. You were less scared of them. I always loved that about you. That's new. What the hell do I say to that? That's the nicest thing you've ever said to me. Yeah, right. Knock it off. I don't know why it's so सिर difficult पे for मत us चढ़ भाई, अच्छा बोला है तो. to just talk. Maybe this is why Mom chose you. And we're back. अरे भाई साहब. Are you bitter right now? Certainly not. Certainly. No. I mean, You are bitter. You're pouting. Look at your fucking face. enough, okay? Stop it. This isn't the time. ओ भाई. I just don't get it. What is there to get? You know Marie. She's unpredictable. अच्छा. Wait, you mean you didn't know? Well, you should see what my signature looks like on the form. She's the worst. Why would she do that? I have no idea. I guess she thought it made sense since I handled the rest of her paperwork. Unless she thought I was a perfect fit since I'm a Libra with Pisces rising or whatever. Alright, but still, it's a big responsibility. And it's a bit weird to ask you, of all people, to make that decision. अच्छा जी. What am I supposed to do? Scream in the middle of the hospital cafeteria? ना. That's not my style. Although, the way this day is going, it might become my style. You can be Acha. pretty clumsy. You can't cook a meal without setting the house on fire. Et voilà! I'm never going to live that down, am I? What the? Depends. Have you क्या figured out a बोल दिया safe भाई? way to brown baked Alaska yet? भैया Whatever. कुकिंग करने This के लिए isn't the time किचन to में घुसे तो rehash आग all लगती. Really? Why would she trust you over me? All right, I've had enough. You know what? You're right. Only an idiot would trust me. Ah, come on. Yeah, here it ये comes. बात तो सही है, You're the ये बात तो reliable सही है. one, aren't you? मैं मानता The हूँ one ये. people can always count on. तेरे जैसे What are चोटे you लोग हो गए talking तो about? वही होता है. I'm out of here. I'd probably दिमाग just का trip दही कर over दिया her तूने. ventilator or something. Wouldn't want that to happen now, would we? मैं गेम खेल रहा हूँ, You're मेरे को being कैसे फील हो रहा है? ridiculous. Please, तेरे को तो sit इसको तो down. डेली तेरे को I झेलना didn't पड़ mean रहा to होगा. upset you. सोचो. Oh, you didn't? Well, you got that wrong. और एक एक्सक्यूज मेरा भागने का. भाग तू भागते ही रहे भाई. भाग स्टूपिड. हाँ. Well, that was embarrassing, wasn't it? I just can't help it. So फिर Mom से wrote भाग. my name instead of hers on a worthless paper. What does it matter? इसको वो नहीं समझ में आ रहा है. इसकी माँ ने इसका नाम Didn't I पेपर में stop लिखा this बिकॉज stupid competition? I hate it, but I feel I can't escape it. तेरी माँ उससे ज्यादा तेरे को प्यार करती है. चोमती है लड़की. ये लड़की भी चोमती है भाई. इसके दिमाग में ब्रेन सेल्स ही नहीं है भाई. इसके 0.50% ब्रेन सेल काटो भाई. इसको ये नहीं समझ में आता भाई साहब. वो साथ में रहने के बाद भी तेरा नाम इसके लिए लिखा है. भगवान, ये मैडम को कोई दिमाग दियो भाई. ये मैडम को कोई दिमाग दियो. Of course I'd remember that day. My infamous 25th birthday.
Oh. The day we met Jan's girlfriend. और तेरी माँ फेमस थी, आर्टिस्ट थी, उसकी वजह से और तेरा The day दिमाग we खराब हो danced a गया. little, ate a little, and drank too much. पैसे से ज्यादा ईगो भी आ चुका Most of all, है, ज्यादा कुछ The नहीं. day everyone went home early because I set the kitchen on fire while making dessert. Obvious. There's Wow. plenty about that night I never told आगे Jan. लगा दिस किचन में. वेरी गुड. याद है. कुकिंग स्किल्स बोलते. I wasn't Gift. expecting Marie to have a present for me, and yet Oh. she remembered. I'll be honest, I was super happy. But Nice as usual one. with Marie, things couldn't just be nice. I Nice. hope you like it because it cost me a fortune. She could afford it too. She wasn't world famous yet, but her career was taking off. Bhai- And with that, her taste became more and more luxurious. Me? Oh, I was light एक तो years बोल away रहे from all मैं that. एक्सपेंसिव गिफ्ट I लाया और बोलते उसको hated पसंद भी it. आना चाहिए. अरे I ऐसा hated थोड़ी it होता है then, भाई. I hate it now. That's how it works with Marie. Even when she does something for Jan and I, in the end, it's always about her. अच्छा भाई तेरा दिमाग कहाँ है? It was the first time Jan introduced us to her girlfriend. Her Oh. very first girlfriend. She didn't make a big deal of it. She didn't even tell me that she would have a guest. I Acha. knew it was important to her. And neither Marie nor myself reacted. She rushed over to hug them both. I don't think I'd ever seen my mother so excited. Then she congratulated Diane for her rejection of patriarchally mandated heteronormativity. Diane didn't say anything. But I could कितना see she was जलेगी upset. अपने माँ से कितना Her जलेगी हाँ? intimacy had just been reduced to activism somehow. And I wasn't there to support her. I Acha. was furious. It's stupid, I know, but I wanted to enjoy my party. And she showed up with something important. नहीं एक्चुअली माँ का जलन नहीं है, All of a sudden, my वो 25th जलन है birthday वो. seemed trite. लेडी का होता है ना, वो unimportant. जलन है. Her girlfriend was called Sasha. लड़कियों वाला She was जलन nice. होता नहीं क्या? वो वाला Intuitive. जलन है. Smart. And very pretty. I was quite reluctant to organize this party. It was the last birthday I would celebrate at Marie's. Your dad and I were about to move in together. So Acha. I wanted to make it special, to impress my mother. earn सबसे her पहले ऐसा respect, गेम maybe मत, even her ऐसा गेम कहाँ admiration. से लाए हुआ? But that would only happen if everything were perfect. The fire made it a complete failure. But to be honest, she'd have found some problem anyway. ये चीजें मेरे को ही समझ में आ रही है, तुमको भी समझ में आ रहा है कि ये लड़की कितनी चोमटी है दिमाग से. Jan always loved being the center of attention. But when she showed up with her hair cut short and dyed green, I almost didn't recognize her. 19 years strong on this earth, and she couldn't care less about people's opinions. She was amazing to me. But I wonder if she was, at least unconsciously, trying to please Marie. It worked, by the way. Marie always had a soft spot for the rebels, and contempt for the rest. I don't think it made Jan any happier, though. और ये लड़की अपने बहन जो सिस्टर है, वो जो वर्ल्ड को नो गिवन एफ करती है, मतलब कैसे भी दिखती है, वो इसको बोल रही थी कि हाँ तेरे को 2 ब्रेन सेल है तेरे पास तो उससे भी कम है ब्रेन सेल. भैंस की आँख. ये छूट गया. I was so stressed out that night that I started drinking early. इसको शैंपेन की Marie पड़ी है, loves to महंगा drink, वाला लेके so आया, does उसको Jan, पसंद आएगा कि and her भैंस की girlfriend आँख Sasha भाई. followed along. Long story short, we got drunk fast. All 4 of us. We had booze, we had cigarettes, plus the other stuff. I don't have to tell you everything. And after a while, Jan was completely out. She could barely stand. Okay. When dinner started, Marie turned on the charm. She laughed loudly, talked a lot, asked all kinds of questions. वही She तो. has the पीने के बाद most कहाँ याद रहता है? unbelievable charisma when she's trying to please someone, you know? And that अच्छा. night, she really was trying. I thought it was odd. She certainly wasn't doing it for me, or for Diane. And then I noticed the way she was looking at Sasha. अरे तू I हर saw जगह the सेंटर gleam ऑफ in her अट्रैक्शन eyes. नहीं रह सकती मैडम. The same as when she You talks have to about Jan understand that. previously.
and I got worried. किचन में आग लगेगा तो ये होगा। अरे भाई जलन के मारे इसे किचन में आग लगा दी भाई। ओह माय गॉड, मतलब इसको आता है कुकिंग में, सच्ची बता रहा हूँ। इसने पर्पसली किया हुआ है, मेरे को ऐसे लग रहा है ये देखियो। Alex called several times that night. He wanted to know how things were going. He had a hunch things would be tense, and he wanted to be my emotional hotline. I didn't answer. I wanted to fend for myself. Emotion hotline? That's why I didn't invite him in the first place. I'll admit, sometimes his support was stifling. और इसका वो जो फ्रेंड है जो इमोशन चीज़ों में, मतलब इमोशनल चीज़ों में वो उससे जाके बात करते, मतलब वो टाइम पे इसको कॉल लगाएगी जब कुछ ऐसे इमोशनल चीज़ें बात करना है। तो साइड लोग होता है ना कोई जिससे सिर्फ वो ही बातें होती है, जिसको बाद में भाव नहीं मिलता, वो उसकी बात कर देती है। I'd got these nice candles to decorate the table with. Obviously, I burned myself when lighting them. To no one's surprise, that was typical me. Scaevous, they called me. It means clumsy in Latin. Marie coined that one. I didn't mind. Quite the contrary. In any family, everyone plays a role. You just need to find the one that suits you. And I like being the bumbling, fumbling one. That way at least. उसको बम्बलिंग फम्बलिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं जान दो भाई मैं कुछ प्रेम चल रहा है, रोस्टिंग का मूड में नहीं हूँ। So yes, Jan and I were trapped in this ridiculous rivalry. The choir girl versus the rebel. The meek versus the indomitable. जाना तो तेरे को था ना बाहर, वो तो रुकी ना अपने माँ के साथ। जलन क्यों रहे तेरे को? Seriously. She's not allowed to show any sign of weakness, and we hold it against each other. क्यों नहीं दिखाएगा? तू weakness दिखा रही है। We asked. Marie forgot Jan's birthday once. Jan didn't say anything. She was convinced there'd be a surprise for her after dinner. But then it was time to go to bed, and she broke down, crying. I did everything I could to comfort her. So I played some music on the living room stereo, and I invited her to dance. And since then, for each of our birthdays, she and I always end up dancing. It's become more intense as we grew in Marie's shadow. We care about each other more than anyone else. ना तू केयर नहीं करती भाई, तू जलती है उससे और कुछ नहीं है। अपने बहन से जलती हो बस, और कुछ नहीं है, नॉर्मल है चीज। The flames went up very high, very quickly. Everyone ran into the kitchen. Marie, Diane, and Sasha. Oh, she screamed at me. She couldn't believe that anyone could be so inept. I said it was an accident. I was trying to brown the baked Alaska, but it got out of hand. No one questioned my version of events. The whole thing was just नहीं, तुमको सहलाएंगे जब तुम किचन में आग नहीं लाओगे, तुमको सहलाएंगे, तुम खुद बोलेंगे नहीं भाई। I never saw Sasha. गाली आओगे और क्या, किचन में आग लगाओगे तो। दिमाग कहाँ पे रख के आई है? क्या छूटा? चाहिए छूटा। Maybe I was just drunk. Maybe I was imagining things. Maybe I was paranoid. But when Marie invited Sasha to her studio to see the paintings and more, that raised a flag. She was up to something. She was trying to seduce her. And maybe she could have. I tried to warn Diane, told her to watch out. She was too far gone. I had to do something, but I couldn't face Marie head on. I wasn't strong enough. So I improvised. क्या इम्प्रोवाइज किया? इम्प्रोवाइज है क्या? देखो यहाँ पे इम्प्रोवाइज की बात हुआ, ये इम्प्रोवाइजेशन है। देखो आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ज़्यादा हो गया क्या? No one noticed the bottle of Japanese whiskey was completely empty. Alcohol burns nicely on the stove. It was perfect for me to craft a diversion. And you know what? I wasn't even that drunk. I was mostly angry. At Marie. At
myself at my inability to confront her face to face. अच्छा Maybe nothing happened after all. Maybe Marie didn't try anything. I'll never know. But I was scared enough for Diane's relationship that I set the kitchen on fire. ये टैक्टिक्स यूज किया उसने किचन में आग लगा के और क्या बचा अभी इसमें कुछ तो बचा है जो मैं छूट रहा है मेरे साथ चाहिए I never told Diane what happened. She still thinks I'm a bumbling idiot. I can't tell her the truth. वो तो है And she wouldn't want to hear it anyway. But what I did that night, I did out of love. Marie always said that you can't trust anyone in life. इसको इन शॉर्ट बोलते हैं तेरे को जलन हो रही है और कुछ नहीं बोलते इसको जलन बोलते Diane हैं could trust me. और अटेंशन ग्रैबिंग चीजें बोलते हैं इसको आसान शब्दों में बोले तो Why would she trust you over me? क्योंकि तुम चोमटिया हो And here we go again, पांब्या हो तुम trying to पांब्या see who can spit the furthest. But you know what? I'm not playing this game. She needs her sister today, not a क्योंकि fight. तेरी सिस्टर नहीं भागी है I अपनी get माँ it. को छोड़ के Get what? और तेरे को एक्सक्यूज चाहिए Why भागने you के लिए think of बस me this way? The chump who keeps screwing things up? हैं। I never. I understand because that's my little routine, you know? What are you saying? कौन सा रूटीन What's भाई wrong with me? I'm not about to tell her all my dirty secrets. That wouldn't be like me at all. Whatever. Just understand this. We both know things can be tense between us. It would be easier if I could act like this is all her fault. Jan's competitive spirit is unmatched. She has to be the first. In अबे everything. इतना हो गया अभी भी Can एक्सक्यूज make a ढूंढ रहे little उसको stupid गलत sometimes. साबित करने Oh, के just लिए like when she was training for tennis, or when we did hamster races. Yeah, exactly. Racing hamsters. Pretty cool, huh? We had these. I felt like punching you at times. Come again? Yeah, it sounds weird when I say it out loud. You're the strongest person I know. And you're built like a sea cucumber. अरे रे रे Honestly, रे you're talking about mom right now. Not just her. Yeah, I'm totally talking about Marie. I'm talking about the fact that you're my sister. खुद के माँ को and नाम that's से बुलाती है भाई special to क्या me. ट्रेडिशन भैंस के आगे And I निकल know भाई it's the same to you. Listen, Diane, I have no idea how things are going to play out with Marie. And it's true, I have been feeling out of it for a little while now. But I do know one thing हैं that's going to help us. What do you mean? I mean that being a psychopathic robot has its perks. Cool heads prevail. And I think this is going to help us make the right choice. The best choice for Marie, sure. But for you and me, too. Maybe. Why are you looking at me like that? It's just. I'm not used to seeing you like this. You sound confident. It suits you. Alright, so what do we do? I have no idea. But I'm not going to tell her that right now. I need to find a different tack. You know your mother. She's stubborn. A real trooper. So, I think we will have to wait and see. I can't. No, I just can't. I'm not going to sit here twiddling my thumbs. We don't have a choice, Jan. Of course we do. We need to stay on top of the doctors. They need to do their absolute best. Come to think of it, we're not keeping her in this hole. I'll call my dad. I'll bet he'll have a buddy in a private clinic somewhere. कर कॉल We're कर not leaving anything to chance. अच्छा Why aren't you saying anything? You're with me, right? We need to fight, don't we? I don't know, Jan. What do you mean? I don't know, Diane. If we were in her place, you know very well what she'd be doing. She'd do everything in her power to make sure we pulled through. We owe her that as well. Don't we? वो नहीं I पता can't take any more illusions of control.
You can't always do something, you know? Running around all over the place, yelling at doctors won't help her just because we think it will. It doesn't work that way. It never does. Sometimes you just need to let go. Let go? Let go of what? See, Diane, maybe this is why Marie chose me. She knows that I can keep a cool head, that I don't let my emotions take over. Bullshit. ये बात तो है You भाई. think this isn't your emotions doing the talking? भाई मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा ही लग You रही go on है. and on saying that mom is the worst mother ever. Do you seriously not think you share some of the blame? What? What do you mean? क्योंकि ये अपने माँ के साथ रह रही, You know थोड़ा very well इमोशनल what I साइड है mean. ना इसका. She could have died in that car. ये अपने बाहर रह रही थी, माँ के साथ नहीं रह रही थी. ये इसका प्रैक्टिकल साइड है. इसके लिए इसने माँ ने जब अभी ये सब हो गया ब्रेन हेमरेज, तो इसके माँ ने इसका नाम लिखा है बिकॉज ये बहुत इमोशनल साइड है. ये प्रैक्टिकली नहीं सोच पा रही है. और डॉक्टर ने भी वही बोला था कि अगर ये बच भी गई, सो बचने के बाद तो वो उससे अच्छा वो नहीं बचती तो वो अच्छा होता, ऐसा डॉक्टर का बोलना था. तो उसको पता है ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते कौन, ये. इसके लिए ये साथ में होने के बावजूद भी इसने अपने दूसरे बेटे का नाम लिखा भाई. Marie was also in the car that day. You remember my little phone? I can't remember why. She was going to town for an errand, I think. I parked in front of her house. She sat in the front, and then she was by my side when I woke up in the hospital. Jan's right. Marie could have died. And the doctor said that this sort of thing can happen due to trauma from years ago. Oh. So it's all my fault then? Are you saying that? All of this is happening अरे because of me? नहीं भाई, तेरा Of course फॉल्ट नहीं, not. ऐसा But नहीं since बोल the रही हो. accident, she's given you work. She's done her best to help you. And you just want to let her die? Shit, I'm not going to give up on her. If you hate her, that's your problem. You're out of your damn mind. Come on. You're so transparent. Shut up! I don't want to hear any more of this. I'm leaving. अरे यार ये एक्चुअल में फाइट हुआ भाई. पिक आउट. Damn it! Did I really have to go off like that? Maybe she's right. Maybe we should fight, just like Marie taught us. भाई Do I really have to be so angry? Do I really hate my mother? ना नहीं भाई, तू अपने माँ को हेट नहीं करते, बट तेरी माँ को पता है कि ऐसे सिचुएशन में कौन अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकता है. सो जो कि है तू, इसके लिए शी नोज कि वो नहीं बच पाएगी, तो इसके लिए तू बुला के जब उसका मेंटल स्टेट अच्छा नहीं होगा, जो इसकी बेटी इसके साथ रह रही थी, जो इसकी छोटी बेटी थी आई थिंक, सो यही हैंडल कर पाएगी उसको. इसको पता है, मतलब इसकी माँ को पता है वो चीज़ें. When will Dad get here? He'll get here when he gets here. Soon. Don't worry. Can't wait. Tomorrow we're visiting Buckingham Palace, and Lizzie says I'll get to taste real fish and chips and... Oh, sorry, Junon. I've never really been jealous of Diane's family. I was too fascinated by the concept of a family. मतलब तुम इसमें That एक was चीज़ an देखना, incredible discovery for me, and so beautiful to see. I was also worried for her. She had a dad and a stepsister. She had something to lose. I only had Marie, and Marie is immortal, so I was safe. मतलब इसमें एक देखना तुम, इसमें हर एक पर्सपेक्टिव दिखा है. सिर्फ लड़की के साइड का पर्सपेक्टिव दिखा है, मतलब इसकी माँ हो गई, इसकी छोटी बहन हो गई, इसकी बड़ी बहन हो गई. लड़की साइड का उनको वो टाइम पे से सोचते कैसे वो बताया. अच्छा है यार, मतलब कैसे सोचते वो थोड़ा ज़रूरी है. So, why do you put the elastic bands round their claws? Is it so they don't cut your fingers?
I appreciate the concern, but no, ma'am. Without the bands, they would just eat each other. When the guy Oh. said that, my mind jumped to my mother. She used to warn me about people and how dangerous they could be. Even me, she said. Don't trust me. Trust no one but yourself. Ah, it was exhausting. Your mom was intelligent, by the way. जो ये चीजें बोली है, किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना, ट्रस्ट योर सेल्फ, बहुत बड़ी बात बोल दी। और सबका एक टाइमिंग होता है आने का जाने का। जब तक तुम खुद को ट्रस्ट नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। साथ में चलने वाले घर वाले चलेंगे, लेकिन काम तो तुमको ही करना होता है। सही बात बोला यार। Your mom was intelligent, bhai. Wow! I'd forgotten how muscular you are. And are you jealous? No. घर वाले सपोर्ट करेंगे, I लेकिन like तुमको it. All right, you're my sister. This is super embarrassing, especially since you're drunk off your ass. पागल जैसे हंस रहे दोनों भाई। I've always found Jan's presence comforting. She only has to stand by me and I start to breathe easier. It's funny how you forget the obvious बिकॉज stuff तेरे as हाफ time goes by. सेल ब्रेन को वही समझ पाते ना, बहन ही बहन को You समझते see, ना। my little dear, there are some things I'd have loved the chance to tell you. For starters, growing up means figuring out what you really care about and what you're better off without. I never understood why the whole world was such a threat to Marie. It damaged me, growing up that way. Now, I've had enough. Jan has always been a reassuring presence in my life. Although I never knew how to tell her, we had completely different lives. We're not affected by the same things, but I hope it's not too late to tell her that I care about her. We owe her that as well, don't we? She's terrified, actually. My little sister. I need to comfort her. Show her that I'm here for अभी इसको her. दिमाग आया देखो। That she's not alone. You know she what? is not. Right about now, there's nothing we can do for Marie. Nothing at all. वो हर एक But चीज I सीखते know जा this रही है। bothers you, and I understand. But that's how it is. It's out of our control. So I'd rather pay attention to what matters the most. Family. That's what exactly? It's you. You're my family, Jan. What about Mom? Marie is different. That's just how she is. She's... Sure, we're part of her life, but we can't expect much more than that. Marie, she's alone against the world. क्योंकि वो अकेले अपने माँ के साथ रह रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा वो एक होता है ना, सर्कल था उसका, काफ़ी छोटा था, काइंड ऑफ ऐसे समझ लो, सपोर्टिव सर्कल था कि उसके बाहर वो देख नहीं पा रहे थे। लेकिन इसकी जो बहन है जो साथ में नहीं रह रही थी, उसने काइंड ऑफ पूरे दुनिया इससे ज़्यादा देखा, तो इसको पता है कि हाँ ऐसे सिचुएशन में उसकी बहनें थोड़ा वो ही इसको हैंडल कर पाएगी, क्योंकि ये इमोशनली पूरा माँ के साथ रह रही तो इमोशनली बहुत अनस्टेबल रहेगी, तो ये सोच नहीं पाएगी वो टाइम पे। वही I हो रहा think है। she'd be furious if she knew she was surrounded with Jesus stuff. ये ऐसे सिचुएशन में प्रैक्टिकल बंदा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ना कि इमोशनल बंदा। Oh, she's a staunch atheist. Pretty much an old school iconoclast. The opposite of her mother, who was a real Bible thumper from what little I know of her. Hence, the biblical first name. वो एक मिनट देना भाई, मस्त स्टोरी चल रहा है, लैपटॉप बंद हो जाएगा, 1 मिनट देना।
अच्छा स्टोरी After all, whether she admits it or not, Mom has one thing in common with the biblical Mary. Both of them had a child whose father was shrouded in mystery, which makes me baby Jesus? I'd prefer not to end up dead on a cross, though. Well, considering what she's been through. As a kid, I mean. What is she talking about? What are you talking about? How do you know what she went through as a kid? Did she talk to you? Once. One night. I didn't really understand. Her dad left when she was like 12 years old. She basically raised her brothers and sisters on her own. Hold on, what? She has brothers and sisters? I guess so. And she's the oldest. And at some point, she burned bridges with everyone. Forever. Oh, wow. Did I know this? I kind of remember, but it feels like a blur. Have we talked about this before? Did I forget that too? That's not what's important right now. You know, Jan, I don't think that Marie has anyone. Not really. She doesn't want to. She can't. She doesn't know how to trust. True. That is the one thing that's beyond her reach. But it's not beyond ours. We need to trust each other, otherwise we're screwed. You understand? Of course I understand. I've spent years trying to get her to pay attention to me. And I don't feel like fighting all the time. Not against you, anyway. We don't have to anymore. What? You mean, now that she's fucking dying? No, I mean, we can decide to do things differently. We don't have to play by her rules, where everyone's out for everyone. Kill or be killed. I think that's... I don't know. It might be her history, but it doesn't have to be ours. I'm not even sure she even believes it herself, actually. I'd rather believe that there are people I can always count on. And that they can count on me because I love them and I care for them. People like you, Didi do. Is she crying? Sorry. I don't know what's going on with me. I'm scared, you know? For Mom. I don't want her to die. Well, right now, she's still alive. And you know her, she's not going down easy. I don't think you're anything like a lobster. I think lobsters are disgusting. Is that right? Me too, come to think of it. Ugh, crap. What? Is it the doctors? No, look. Alex? You should answer. Are you sure? Are you gonna be okay? Ask me again and I'll slap you. Of course I'll be okay. You're coming right back, aren't you? You bet I am, little sis. I don't know what would have happened between your dad and I if you were still here. Would we have agreed on how to raise you, the kind of values to impart? I think so, at least on the surface. Actually, we had made a deal when you were still... He came up with the idea, if memory serves. We don't contradict each other in front of Astrid. If we have to fight, we do it in... But that never happened anyway. Your dad doesn't get angry. Perhaps because he hates confrontation. God damn it, you know. Okay, pretend I didn't say anything, huh?
चलो भाई, आज का गेम तुमको कैसे लगा डेफिनेटली बताना। So this is MGB Gam is signing off. Tata, Baba, good night, see you. और अगर कोई ट्विच पे फॉलो करना चाहता है वहाँ पे फॉलो कर सकते हो यार। नीड टू अपने को अपना इंक्रीज करना है, क्या है वहाँ पे थ्रेशोल्ड इंक्रीज करना है, धीरे धीरे करेंगे। कहाँ गया? ये क्या हो रहा है? ये नहीं है। ये है, किसी को फॉलो करना होगा तो डेफिनेटली करके रख देना, बाकी तो चलो आज के लिए अपना इतना हो गया, निकलता हूँ मैं। अच्छा, गुड नाइट, सी यू।